कैसे रख पाऊँ। 1 मिनट। किसी का वीडियो ऑन है शायद सर, मुझे नहीं लग रहा किसी का ऑन है। नॉट अ सिंगल वन। हाँ चलो, प्रतीक जी का हो गया। चलो, एटलीस्ट आई नीड वन। एटलीस्ट वन। कम से कम एक से तो काम चला लेंगे हम, ज़्यादा ना मिले तो ना सही। तो थैंक यू वेरी मच प्रतीक जी, और आपके साथ साथ मैं इस एमएमटीटीसी के निदेशक प्रोफेसर मोहम्मद अतीक साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनका स्टाफ, साथ ही साथ जिस इंस्टीट्यूट के साथ ये प्रोग्राम आपका एमएमटीटीसी ऑर्गेनाइज कर रहा है ऐसा, राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ। 1 मिनट, कहाँ गया ये? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, राम मेघे इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट अमरावती। तो आई थिंक बिफोर आई प्रोसीड, प्रतीक जी मुझे ये बताएंगे कि ये कोर्स शुरू कब हो चुका है सर? प्रतीक जी, ये सर। ये कोर्स शुरू कब हुआ है? सर ये कोर्स इस मंडे से ही शुरू हुआ है सर, एंड टुडे इज द 5th डे ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके, मंडे। मंडे मीन्स इट इज 21st। ओके, यस। कोई बात नहीं। एंड बाय नाउ आई थिंक certain themes like सर multidisciplinary education, IKS, नो सर, आई presenting. गेस वी हैव नॉट yet completed. We Okay, have completed the academic leadership as well as the research development and higher education and society in the credit framework. So such kind of okay, topics and skill okay. development we have Ve- specifically completed, sir. Very nice, very nice. It is the day fifth, therefore you could complete some 4 topics so far a day. कोई बात नहीं। तो जो टॉपिक मुझे आज दिया गया है, दैट इज डाइवर्सिटी एंड इट्स इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन। हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे और उसके साथ उसका इंक्लूजन किस प्रकार हो सकता है और उसमें क्या चैलेंजेस हैं। मतलब मैं कहना ये चाहूंगा कि आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन आई से आई विल बी एबल टू गिव यू an idea what diversity is there, how far we could include them, then what provision this NEP 2020 talks about to include more and more people, and finally, the fourth thing, I will be discussing some of the challenges which pose or which are posed before us when we want to include more and more people. So this is the idea that I want to give you here. जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, किसी का कैमरा ऑन है ना? चंद्रकांत पटरी जी और मेरे ख्याल से मेरे सामने अभी देशमुख साहब थे। कम से कम आप 2 लोग तो कैमरा ऑन रख लीजिएगा प्लीज। 1 मिनट। हाँ, यस प्रतीक साहब, आप आप थोड़ी सी खबरदारी लेना कि आपका कैमरा ऑन रहे। अब 1.5 घंटे के लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है। अब ये सारा सोच के आपको साथ चलना है। सो डाइवर्सिटी, इट हैज बीन द हॉलमार्क ऑफ इंडिया। शायद दुनिया में कोई ऐसा एक आधा ही मुल्क होगा जहां डाइवर्सिटी कई सालों से, कई सदियों से चलती आ रही है। हम कभी कभी कहते हैं कि अमेरिका इज द लैंड ऑफ माइग्रेंट्स। प्लीज रिमेंबर, अमेरिका इज द लैंड ऑफ माइग्रेंट्स, क्योंकि अमेरिका का जो ओरिजिन थे, हम जिसको रेड इंडियन कहते थे, वो तो अब लगभग खत्म हो चुके हैं। और आज जिनको हम अमेरिकन कहते हैं, वो सारे के सारे यूरोप से आए हैं, सारे के सारे। एंड मेजर ऑफ देम वेर इंग्लिश पीपल। और बाद में 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट की वजह से एशिया से गए, अफ्रीका से गए। अफ्रीका से जो गए एज ए लेबरर गए थे, एज ए निगरोज गए थे। और बाद में जो
एशिया से गए हैं या साउथ इंडिया से गए हैं, most of them have gone for employment. So in that way, उस हालात में अमेरिका इज नोन एज द लैंड ऑफ माइग्रेंट्स। वहां जितने भी लोग हैं वहां माइग्रेशन कर चुके हैं, बट दैट कैन नॉट बी सेड इन केस ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में माइग्रेंट्स है लेकिन बहुत कम है। कम मतलब बहुत कम है। माइग्रेंट्स इन द सेंस, माइग्रेंट भी हमारे पास 1970 या उसके आगे पीछे आए हैं, या फिर हम कहेंगे 70 में कहूंगा, जब बांग्लादेश वार बना या फिर तिब्बत में कुछ होता है तो वो कुछ माइग्रेंट्स हमारे पास है। बट प्रियर दैट और लॉन्ग लॉन्ग एगो हम जिसको कहेंगे कि उससे भी कई साल पहले, कई सदियों पहले हिंदुस्तान अपने आप में एक डाइवर्स रह चुका है। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन्स, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ बिलीफ्स, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रेस, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, diversity in terms of I can say culture, food, appearance and what not. कहते हैं कि दुनिया के 6 रिलीजन हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में अलग अलग रेस के भी यहाँ लोग पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग है, साउथ का अलग है, आपके सेंट्रल इंडिया का अलग है, और बाद में फिर नॉर्थ इंडिया का अलग है। मतलब ये सारी हमारे पास शुरू से डाइवर्सिटी रही है, फ्रॉम डे वन आई कैन से। आज हम जिनको हिंदुस्तानी कहते हैं, अब वहां भी बात आती है कि भाई ओरिजिनल हिंदुस्तानी कौन थे। अब कई लोग ये थ्योरी अब सामने रखते हैं कि जो लोग साउथ इंडिया में रहते हैं दे वेर द मूल निवासी ऑफ इंडिया, हम जिसको कहते हैं मूल निवासी, और ओरिजिनल्स और ओरिजिनल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कहते हैं। और बाद में ये कहा जाता है कि आर्य भी बाद में आए, आर्य आए, फिर हुन आए, कनिष्क आए, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक नेशन आ गए, फिर क्रिश्चियन आ गए, और बहुत सारे लोग मिला के फिर ये हिंदुस्तान बना है। सो मैं जो हमारे पीएम साहब ने अमेरिका में कहा था 1-2 साल पहले, उसी को यहाँ मैं आपके सामने दोहराऊंगा। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है। मैं उसी को थोड़ा सा अल्टर करके कहूंगा कि डाइवर्सिटी इज इन आवर डीएनए। हिंदुस्तान के डीएनए में डाइवर्सिटी है। अब ये लोग कई सालों से आ रहे हैं यहाँ, और हिंदुस्तान की एक खास बात यह रही है कि जो भी हिंदुस्तान में आया उसको हिंदुस्तान ने अपना बनाया है, एकोमोडेट किया है। आर्यन आए तो आर्यन तो सबसे पहले आज कहते कि हम हिंदुस्तानी है कहते हैं। उसके बाद हम देते कि कनिष्क आए, कुषाण आए, और अलग अलग रेस के लोग आए। कुछ यूरोपियंस आए, सिकंदर आया, उसके बाद बहुत सारे इन्वेजन हुए बाद में। मेरे ख्याल से 10th 11th सेंचुरी में फिर हमारे पास इस्लामिक इन्वेजन होते हैं। उसके बाद 18th या 17th सेंचुरी में यूरोपियन आते हैं, और ये सारे लोग आके यही रह जाते हैं एक्सेप्ट क्रिश्चियन। इस बात को मैं आपके सामने बहुत कैटेगोरिकली रखना चाहता हूँ, एक बात को प्रतीक जी, कि यूरोपियन इन्वेडर्स और अदर इन्वेडर्स में एक बुनियादी फर्क यहाँ है। Am I audible to you? आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? हेलो। यस यस सर। हाँ, कोई तो कैमरा ऑन करे ताकि मुझे पता चले कि मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। या फिर हो क्या जाता है कि ऑनलाइन मोड में स्पीकर को पता नहीं चलता कि वो कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, क्योंकि उसके सामने खुद का कैमरा है, बाकी लोगों के सिर्फ नाम दिखाई देते हैं। तो आप में से कुछ लोगों से मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1-2 लोग अपना कैमरा ऑन रखिए, नहीं तो मैं थोड़ा आगे नहीं जा पाऊंगा। दिस इज माई डिफिकल्टी। ये मेरी अपनी एक मुश्किल है, बहुत पर्सनल मुश्किल है मेरी, लेकिन दैट इज द थिंग। तो मैं आपको कहने ये जा रहा था, या मैं बताने ये जा रहा था कि देर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द यूरोपियन
इन्वेडर्स इन इंडिया एंड अदर इन्वेडर्स इन इंडिया। जब मैं बाकी आक्रांता की बात करता हूं मैं, तो उसमें कुषाण आ गए, हुन आ गए, फिर इस्लामिक इन्वेडर्स आ गए, और मैं जैसे कि मैं बात कर रहा था यूरोपियन की। यूरोपियन को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हिंदुस्तान में आए हैं, उसमें से कोई वापस नहीं गया है। प्लीज रिमेंबर, उसमें से कोई भी वापस नहीं गया है। वो यहाँ आए, यहाँ उन्हें उन्होंने लड़ाई की, फिर यहीं बस गए, यहीं मर गए, यहीं शादियां बनाई, और इसी मिट्टी को अपनी मिट्टी बना और अपना इतिहास हमारे साथ छोड़ गए। बट जैसे कि मैं कह रहा था, कुषाण आ गए, हुन आ गए, इस्लामिक आ गए। देखो, 12वीं शताब्दी के बाद जितनी भी दिल्ली में सल्तनत बनी है, उसमें से कोई भी वापस नहीं गया। जितने भी मुगल बादशाह बने, वो सारे के सारे यहीं मर गए। सिर्फ बाबर की कब्र अफगानिस्तान में है, बाकी सारे लोगों की कब्र यही है। तो इन्होंने इसी मिट्टी को अपनी मिट्टी माना, इसी जमीन को अपनी सरजमीन माना है, और जो भी किया वो यही छोड़ के गए हैं। बट फॉर यूरोपियंस इट वॉज वेरी क्लियर। जब से यूरोपियन हिंदुस्तान में आए हैं, तब से उन्हें इस बात का उन्हें पूरी तरह इल्म था कि हमें इस देश को लूटना है और हमें एक दिन जाना है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बट एज द रिजल्ट ऑफ दिस, इतने सारे इन्वेजन होने के बाद, इतने सारे माइग्रेशन होने के बाद, आज हमारा स्टेटस ये है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वैरायटी के लोग पाए जाते हैं, एंड दैट वी कॉल टुडे एज डाइवर्सिटी। जैसे कि नेहरू जी ने कहा था, देर इज यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। हम भिन्न भिन्न हैं, फिर भी हम एक है। हम अनेक हैं, फिर भी हम एक हैं। तो इस डाइवर्सिटी को सिर्फ कहने मात्र के लिए रखना हमारे काम का नहीं है। सिर्फ किसी प्लेटफॉर्म पे कहना कि हम डाइवर्स है, हमारे डीएनए में डाइवर्सिटी है, या जो जो भी चीजें हैं, उसको सिर्फ कहने भर से बात नहीं बनेगी। वी हैव टू थिंक ईच वन ऑफ देम, वी हैव टू रीच आउट टू वन ऑफ देम, ईच ऑफ देम, तभी कुछ बात आगे बनेगी। और ये एनईपी 2020 उसी की बात करती है। ये एनईपी 2020 बात करती है जो हमारे पास डाइवर्स ग्रुप्स हैं। हम वो डाइवर्स ग्रुप सिर्फ, मेरे कहने का मतलब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो डाइवर्स ग्रुप सिर्फ अब कलर में डाइवर्स नहीं है, रिलीजन में डाइवर्स नहीं है, या फिर खान पान में डाइवर्स नहीं है। आज उनकी डाइवर्सिटी अब हमें सोशल टर्म में भी देखनी पड़ेगी, उनकी डाइवर्सिटी अब हमें फाइनेंशियल टर्म में देखनी पड़ेगी, उनकी डाइवर्सिटी अब हमें उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी देखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ हमें उनकी डाइवर्सिटी उनके जोग्राफिकल लोकेशन को भी साथ लेकर देखनी पड़ेगी। प्रतीक जी, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हेलो। कुछ बात आगे बढ़ाए। हेलो। हेलो। कोई मुझे सुन भी रहा है? अरे, कम से कम आप एक दो लोग तो कैमरा ऑन करें, ऐसी भी क्या दिक्कत है? सॉरी टू से, बट आई कांट कंटिन्यू विदाउट सीइंग यू। ये मैंने कहा कि ये मेरा प्रॉब्लम कहिए या मेरी जिद कहिए, वॉट एवर यू वांट टू से। आप सेशन खत्म होने के बाद जिस नाम से, जिस जिस वर्ड में आप मुझे डिस्क्राइब करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, बट दिस इज माय प्रॉब्लम। मैं आप में से किसी का चेहरा देखे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मुश्किल से दो चार सेंटेंस कह पाऊंगा और फिर रुक जाऊंगा। तो एनीवे, थैंक यू योगी जी और थैंक यू नेहा जी।
कम से कम आपने मेरी इस जीत को स्वीकारा है. नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू सो दैट वी विल मूव अहेड. 1 minute. Yes. Is it visible to you? Yes, sir. थैंक यू. एक मिनट जरा उसको, ये किसका है? 1 मिनट. ये पता नहीं क्यों हैंग कुछ हो रहा है ये. 1 मिनट. It is being visible to you now. ओके. एक मिनट. हाँ हाँ, यस. चलो, थैंक यू अगे जी. मैं कम से कम आपको तो देख पा रहा हूँ. ये इधर कैसे गया ये? हम्म, कोई तो दिक्कत आ रही है. नहीं, it's आप visible, देख sir. पा रहे हैं ना इसको? हाँ, it's visible. चलो, थैंक यू. तो सबसे पहले सवाल आता है कि हम सारे लोगों को, ये सारे डाइवर्स ग्रुप को हम इंक्लूड क्यों करना चाहते हैं? ये क्या हुआ है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज हैपनिंग? कुछ तो हुआ है यहाँ की सारी चीजें. एक मिनट है. चलो, एनीवे, कुछ तो गड़बड़ है वहां. शायद दो चार चीजें एक साथ हो चुकी है. एनीवे, पता नहीं मैं आपको क्यों नहीं देख पा रहा हूँ. आप में से एक को भी नहीं देख पा रहा हूँ मैं. No, my oh, हाँ, आपका कैमरा ऑन है, लेकिन हाँ, यस, इधर आ गया. 1 मिनट है. 1 मिनट. चलो, थैंक यू. हाँ, थैंक यू. यस सर. नाउ इट इज विजिबल टू मी. यस. तो सबसे पहला सवाल आता है, भाई हम इन लोगों को हायर एजुकेशन में लाना क्यों चाहते हैं? Why we want to bring them into higher education? सबसे पहला सवाल ये आता है. क्या बिना शिक्षा के लोग जी नहीं रहे हैं? बिल्कुल जी रहे हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, जब हम बात करते हैं कि अब हमें सुपर पावर बनना है, या जब हम बात करते हैं कि हमें दुनिया की तीसरी दूसरी इकोनॉमी बनना है, तो ये सारे चीजों को, इन सारे सपनों को साकार करने के लिए हर एक का कंट्रीब्यूशन, हर एक का सहयोग मैटर करता है. जब, और साथ ही दूसरी एक चीज हम जिसको हम बार बार कहते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. और हमारी डेमोक्रेसी कौन सी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. हमारी डेमोक्रेसी कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. और हमारी डेमोक्रेसी एक ख्वाब देखती है, या हमारी डेमोक्रेसी या हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट्स अपने आप को वेलफेयर स्टेट कहती है. वेलफेयर स्टेट, हम जिसको मराठी में कल्याणकारी राज्य कहते हैं. जो गवर्नमेंट लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, ऐसी गवर्नमेंट को हम कहते हैं. इसलिए, और उस रोल को बनाए रखने के लिए हम जानते हैं कि हमारे संविधानकर्ताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस को बहुत महत्व दिया है. सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय. जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो हमें हर एक तबके का यहाँ ध्यान रखना पड़ता है. हर एक तबके का. तो फिर वो किसी भी धर्म से हो, उसका बिलीव कोई भी हो, वो लड़का हो, लड़की हो, या थर्ड पर्सन हो, काला हो, गोरा हो, जो भी हो, किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, तो हर एक को समान अधिकार मिले, समान अपॉर्चुनिटी मिले, तभी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशल जस्टिस की बात की गई है, हम उसको जोड़ पाएंगे. दूसरी बात जैसे मैं कह रहा हूं कि
आजकल ये भी कहा जाता है, कभी कभी हम पॉलिटिकल गलियारों में इस बात को कई बार सुनते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी हमारे पास है ना? दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी हमारे पास है. We have the largest young population with us. लेकिन अगर इस पॉपुलेशन को हम शिक्षित नहीं कर पाए, उनको कोई स्किल एजुकेशन नहीं दे पाए, तो ये जो पॉपुलेशन है जिसको हम आज एसेट के रूप में रखते हैं, अगर उनको एजुकेशन ना मिला, शिक्षा ना मिली, तो वो पॉपुलेशन हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है ना? एसेट्स एंड लायबिलिटी हमारे लिए ये प्लस पॉइंट भी हो सकता है और माइनस पॉइंट भी हो सकता है. ये हमारे लिए एसेट भी हो सकता है और लायबिलिटी भी हो सकती है. एसेट कब बनेगा? जब इतनी युवा आबादी काम करने वाले आबादी बनेगी, जब ये युवा ये आबादी अगर प्रोडक्टिव आबादी बनती, मैं रिप्रोडक्टिव नहीं कह रहा हूं, मैं प्रोडक्टिव कह रहा हूं. रिप्रोडक्टिव हम बाय डिफॉल्ट है. तो अगर ये आबादी काम करने वाले आबादी बनती है, कुछ आई थिंक आई वर डिस्कनेक्टेड. चलो कोई बात नहीं. एक मिनट. दिखाई दे रहा है ना आपको ये? चलो थैंक यू. थैंक यू प्रतीक्षा जी. तो I was telling you that if we don't offer them education, if we don't include them in our nation making, this largest population may become a liability to us.
अब मैंने शुरू में कहा कि ये डाइवर्सिटी जो हमारे अलग अलग फॉर्म में है, ये रिलीजन में है, ये ज्योग्राफी में है, ये ट्राइब्स में है, ये कास्ट में है, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में है। मतलब ये डाइवर्सिटी सिर्फ एक फॉर्म में नहीं मिलेगी आपको, अलग अलग फॉर्म में मिलेगी। तो ये सारे लोगों को एक साथ लाना हमारा एनईपी का एक लक्ष्य है, इसका टारगेट है। अब हम बात करते हैं कि आज के हमारे हालात क्या है, हम किस हद तक डाइवर्सिटी को इंक्लूड कर पाए। तो लेट मी मूव ऑनवर्ड। यस, ये आपको दिख रहा है नहीं है? यस, ओके। कैन यू सी दिस स्लाइड? Yes, sir. It's visible. चलो, यस। तो सबसे पहले तो हमें बात करनी पड़ेगी कि हमारा हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर की साइज क्या है। हम कहते हैं कि दुनिया में लगभग तीसरी या पांचवा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका सेटअप है। और जहां तक हम 2021-22 के आंकड़ों की बात करते हैं, 2021-22 के आंकड़े, शायद योगी जी आपको पता होगा कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसको हम कहते हैं AISHE रिपोर्ट, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट। और अभी हमारे पास लेटेस्ट 2021-22 का अवेलेबल है, उसके बाद का अवेलेबल नहीं हुआ है। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से और अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, इन इंडिया there are 1168 यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी लाइक इंस्टीट्यूट्स। अब उसमें एटोनॉमस यूनिवर्सिटीज आ गए, सेंट्रल आ गए, स्टेट आ गए, प्राइवेट आ गए, ओपन आ गए, हर एक टाइप के आ गए इसमें। तो दैट नंबर इज 1168। आज शायद वो 200 के पार निकल चुके होंगे। जहां तक बात करते हैं कॉलेजेस की, एज पर दिस रिपोर्ट वी हैव हैड 45,473 कॉलेजेस। अब ये कॉलेजेस अलग अलग टाइप के हैं, इसमें एडेड कॉलेजेस है, अनएडेड कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, ट्रेडिशनल कॉलेजेस है, इवनिंग कॉलेजेस है, प्रोफेशनल कॉलेजेस है, मेडिकल है, ऑल काइंड ऑफ कॉलेजेस टेकन टुगेदर द नंबर इज 45,000 प्लस। उसके साथ साथ हम स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन की भी बात करते हैं। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन, SAIS, जहां 12th के बाद की शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन वो इंस्टीट्यूट किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेट होता नहीं है। हम जिसको SAI कहते हैं, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स। आई रिपीट, ये इंस्टीट्यूट किसी भी विश्वविद्यालय से संलग्न या संबंध नहीं होते हैं। एग्जाम्पल मैं कहूंगा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट कॉलेज की, हम बात करेंगे नर्सिंग कॉलेज की, और ऐसे लगभग 7 DED की बात करेंगे हम, DED, हम जिसको डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन कहते हैं। अब ये +2 के बाद है, ये 12वीं के बाद है ये सारे कोर्सेस, लेकिन वो किसी भी विश्वविद्यालय से एफिलेटेड होता नहीं। ऐसे भी लगभग हमारे पास 12,000 इंस्टीट्यूट्स हैं। आज हो सकता है कि ये नंबर आगे बढ़ा होगा। तो लगभग 1168 यूनिवर्सिटीज एंड यूनिवर्सिटी लाइक इंस्टीट्यूट्स, 45,000 कॉलेजेस और लगभग 12,000 ये हमारे इंस्टीट्यूट्स, ये सारा मिला के हमारा इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारा सेटअप है। अब हम देखेंगे, और मैं आपको ये भी बता दूं, इन सारे इंस्टीट्यूट में लगभग 15 लाख टीचर्स काम करते हैं। 15 लाख टीचर, मोर देन दैट बट नॉट लेस देन दैट। अभी 15 लाख कैसे हैं? इसमें से कुछ प्रोफेसर है, कुछ एसोसिएट्स है, कुछ असिस्टेंट है, कुछ लोग अभी भी लेक्चरर्स है, कुछ लोग ट्यूटर्स है, डेमोन्स्ट्रेटर्स है, कुछ लोग रेगुलर है, कुछ लोग एडॉक बेसिस पे है, कुछ लोग टेम्पररी बेसिस पे है, वट एवर द नेचर में भी। ये सारा नंबर लगभग
15 लाख प्लस हो जाता है। तो ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करेंगे कि इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम कितने स्टूडेंट को एनरोल कर पाए हैं, उनको एडमिशन दे पाए हैं, एंड द नंबर इज बिफोर मी। अगर उसी इंस्टीट्यूट का अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन दी तो ये बात है, देख लेना। ये 1168 में 240 सेंट्रली फंडेड है, 445 स्टेट फंडेड है, 10 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, प्लीज रिमेंबर, और 473 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। मैं 21-22 की बात कर रहा हूं मैं। आज शायद फिगर थोड़े से बढ़ चुके होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का 21-22 के बाद कोई रिपोर्ट नहीं आया है। दिस इज द लेटेस्ट वन। तो दिस इज अबाउट यूनिवर्सिटीज। फिर बात करते हैं कॉलेजेस की। जैसे मैंने कहा कि 45,000 प्लस कॉलेजेस हैं। इसमें लगभग गवर्नमेंट के 9,193 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसका पूरा ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। हम ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय नागपुर या फिर आपका अमरावती का कॉलेज कहते हैं गवर्नमेंट का, विदर्भ महाविद्यालय, सो दीज आर कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट्स। तो ये लगभग हिंदुस्तान में हमारे लगभग 9,193 है। फिर प्राइवेट एडिड, इसका मैनेजमेंट प्राइवेट है, लेकिन इसको गवर्नमेंट कुछ ग्रांट देती है, सैलरी ग्रांट देती है, जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे पाए जाते हैं। इसका नंबर भी लगभग 5,693 है। फिर बात आती है प्राइवेट अनएडिड की। मैनेजमेंट प्राइवेट है लेकिन लेकिन उसको कोई ग्रांट नहीं मिलता, कोई उसको सैलरी ग्रांट या डेवलपमेंट ग्रांट नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा नंबर है, 27,000 प्लस। मतलब अगर आप टोटल कॉलेजेस लोगे तो उसमें से 65% कॉलेजेस आर अनएडेड कॉलेजेस, लगभग 60%। और जहां तक बात की मैंने स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन की, इसमें डीएड कॉलेज लगभग 3,000 के आसपास है, उसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज लगभग 3,599 है, और नर्सिंग इंस्टीट्यूट भी लगभग 3,117 है, 3,317 है। ये हमारा सारा सेटअप है। अब बात करेंगे थोड़ी सी हम इधर की। इतने सारे इंस्टीट्यूट में हमारा एनरोलमेंट कितना है, सबसे बढ़िया बात यहाँ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है कि सारे यूनिवर्सिटीज में मिला, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिला के मेरे ख्याल से देख लेना 71 लाख है यहाँ यूनिवर्सिटीज में, सिर्फ 71 लाख। और ये दोनों मिला के स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और फंडेड यूनिवर्सिटीज में सारा मिला के लगभग 96 लाख से। ये नंबर थोड़ा सा ध्यान में रखना। कुल यूनिवर्सिटीज में मिला के 96 लाख ये नंबर है, और ये टोटल एनरोलमेंट का ये 22% है लगभग। अब बात करते हैं कॉलेजेस की। कॉलेजेस में देख लेना, ये लगभग कितना 3.4 करोड़ सारे कॉलेजेस में मिला के हैं। सारे कॉलेजेस में मिला के 3,04,00,000। आप देख लेना कहाँ 96 लाख और कहाँ 3,04,00,000। आप समझ सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बर्डन कहाँ है, कॉलेजेस पे, उसमें भी फिर अनएडेड कॉलेजेस में। अब ये सारी चीजें देख लेना। प्राइवेट एडेड कॉलेज में सिर्फ 19.8 मिलियन है, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 36 मिलियन है, 3.6 मिलियन है। और ये देख लेना डी एड का सारा नंबर मिला के मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। और ये सारा अगर हम साथ लेते हैं, अब तक मैंने आपको क्या बताया, इंस्टीट्यूट कितने हैं और उस इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट कितना है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि ये जो एनरोलमेंट हमारे पास है उसमें डाइवर्सिटी कितनी है, वो कौन से डाइवर्स ग्रुप को इंक्लूड करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 21-22 के हिसाब से हमारे पास लगभग 4,33,00,000 बच्चे हायर एजुकेशन में एनरोल्ड थे। मैं कहूंगा है, नहीं कहूंगा थे। 4 करोड़
33 lakhs. ये नंबर कम ज्यादा है, लेकिन आई एम टेलिंग यू द राउंड ऑफ नंबर. ये कुछ थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना नहीं है. और उसमें भी मेल कितने हैं? 2.26 करोड़ एंड फीमेल है 2.07 करोड़. इतना भी देखो, जेंडर डिस्पैरिटी यहाँ भी है. जेंडर डिस्पैरिटी यहाँ है. फिर बात करते हैं एससीज की. मैंने कहा था ना, ये हमारे डाइवर्सिटी अलग अलग ग्रुप में डिस्पर्स है. अलग अलग ग्रुप में कुछ एससीज है, कुछ एसटीज है, कुछ ओबीसीज है, कुछ माइनॉरिटीज है, कुछ पीडब्ल्यूडीज है, कुछ ईडब्ल्यूएस है एंड व्हाट नॉट. आप देख लेना, ये टोटल है 4 करोड़ 33 लाख. लेकिन उसमें जब हम एससीज की बात करते हैं, जब हम उसमें एससीज की बात करते हैं, तो एससीज का एनरोलमेंट हमारे पास 66 लाख आ जाता है. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको ये भी बता दूं. What is this? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इसको फाइल को लगा देना, बाद में लगा लेते हैं. बाजत को भेजना. तो 4 करोड़ 33 लाख ये स्टूडेंट तो हमारे पास एनरोल्ड है, लेकिन ये हमारे टोटल युवा आबादी का सिर्फ 28.4 है. हम जिसको जीईआर कहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. आपको शायद पता होगा योगी जी की जीआर कैसे निकाला जाता है. इसका सिंपल फॉर्मूला है कि हमारे देश में 18 से लेकर 23 ईयर तक जितनी भी आबादी है, एक, आप जानते हैं कि 2011 के बाद हमारा सेंसस नहीं हुआ है. 2011 में हमारा लास्ट सेंसस हुआ था, हमारी जनगणना हुई थी, उसके बाद नहीं हुआ. लेकिन एक हमारा ईयरली ग्रोथ रेट कैलकुलेट करके ये निकाला गया कि हमारे देश में इतनी आबादी 18 to 23 के एज ग्रुप में आती है. आई रिपीट, the part of population or the portion of population which falls in the age group of 18 to 23 is called eligible population for higher education. मैं रिपीट करता हूं इसको. The portion of population or the part of population that falls in the age group of या लाईन्स ज्या आखल्या तू या हाताने आखल्या की स्केल यूज करून. प्रतीक जी अपने आप को म्यूट कीजिएगा, शायद आपका स्पीकर ऑन रह चुका है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके. हाँ. तो the part of population which falls in the age group of 18 to 23 is called the eligible population for higher education. उसमें से जितनी पॉपुलेशन हायर एजुकेशन में आ सकती है या आ चुकी है, दैट इज कॉल्ड जीईआर. इज इट क्लियर सर? दैट इज कॉल्ड जीईआर. और हमारा जीईआर 21-22 का 28.4% है. इसका मतलब क्या है? 71.6 population of that age group is outside higher education. मैं दूसरी भाषा में कहूं, पिछले 75 सालों में या 77 सालों में हम सिर्फ हमारे 28% युवा पॉपुलेशन को उच्च शिक्षा में ला पाए हैं, और अभी भी 71% से ज्यादा हमारे युवा पॉपुलेशन उच्च शिक्षा से बाहर है. मतलब आज भी हमारा लगभग, मैं कहूंगा कि 2/3 और मोर देन 2/3 पार्टीज आउटसाइड हायर एजुकेशन. मैं पूरे पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ. ओनली दैट पॉपुलेशन दैट फॉल्स बिटवीन 18 to 23. अब बात करते हैं एससीज की. एससीज आई टोल्ड यू 66.23 लाख आर देयर. और एससीज का जीआर कितना है? 25.9.
मतलब यहां भी हम यहां भी कहेंगे कि लगभग 74.1 आर आउटसाइड हायर एजुकेशन, वी कुड नॉट इंक्लूड देम। हम उनको एडमिट नहीं कर पाए, हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, कारण बहुत है उसके, लेकिन नहीं कर पाए। फिर आते हैं एसटीज पर। एसटीज का कितना एनरोलमेंट है? 27.1 लाख, रफली 27 लाख, लगभग एससी से आधा। और एसटीज का जीआर कितना है हमारे पास? 21.2, यहाँ तो लगभग 79% आउटसाइड है। मैं फिर एक बार उस बात को आग पे सामने रखूं जो मैंने शुरू में कहा था, हमारी डाइवर्सिटी अलग अलग कास्ट में है, ट्राइब्स में है, रिलीजन में है, डिफरेंट लोकेशन में है। और इतने सारे लोग अभी भी उच्च शिक्षा के बाहर हैं। ये डाइवर्सिटी उच्च शिक्षा के बाहर है, उनको अंदर लाने का चैलेंज हमारे सामने। फिर बात करते हैं ओबीसी की। योगी जी इसको जरा ध्यान से देख लेना। ओबीसी का एनरोलमेंट हमारे पास है 1.63 करोड़, हाईएस्ट 1.63 crore. But see here, I have not given here GER. मैंने जनरल का जीआर दे दिया, मैंने एससी का जीआर दे दिया, आपके सामने रखा, मैंने एसटीज का रखा, लेकिन मैं आपके सामने ओबीसी का नहीं रख पाता हूं। क्यों? कारण सिंपल है कि हमारे देश में कास्ट वाइज सेंसस नहीं होता है। आजकल पॉलिटिकल गलियारों में ये तो बात चल रही है आगे। हमारे पास, गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि देश में ओबीसी कितने हैं। जब एग्जैक्ट फिगर नहीं है हमारे पास, तो हम नहीं बता पाते कि उतने उतने में से कितने परसेंट लोग हमारे पास आ चुके हैं। मतलब टोटल फिगर हमारे पास नहीं है। एनरोलमेंट का फिगर है, जैसे कि मैंने कहा 1.63 ओबीसी स्टूडेंट्स आर देयर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो कितने में से है हमारे पास एससी का सेंसस होता है, एसटी का होता है, लेकिन बाकी जातियों का सेंसस नहीं होता। इसलिए हम या गवर्नमेंट या आप और हम नहीं कह पाएंगे कि एससी या ओबीसी का जीआर कितना है। उसके आगे बात करते हैं अदर ग्रुप्स की, जिसमें माइनॉरिटीज आते हैं, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी आते हैं, और इसमें ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी आते हैं। उनका नंबर है लगभग 37.58 लाख। उनका भी जीआर हम यहां नहीं दे पाएंगे। हमारे पास कोई फिगर नहीं है कि हमारे पास माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन कितनी है। हम आज आपकल इलेक्शन चल रहे, इलेक्शन में हम हर बार सुनते हैं, इलेक्शन के दिनों में हम सुनते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना दलित वोटिंग है, इतनी मुस्लिम वोटिंग है, इतनी ट्राइबल वोटिंग है। लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट पॉपुलेशन का वो नंबर नहीं दे पाते। उसके आसपास या उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि सी, टोटल एनरोलमेंट में एससी 15% है, एसटी 6.3% है, ओबीसी 37.8 है, और ये बाकी सारे मिला के 40% हो जाते हैं, सारे मिला के। और यहाँ पहली बार यहाँ फिगर दिया है कि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट से कितने बच्चे हैं। नॉर्थ ईस्ट, इसमें लगभग 7-8 स्टेट है, आसाम मेघालय सारे मिला के लगभग 8 स्टेट है। और आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट से हमारे पास सिर्फ 12 लाख है। तो यू कैन जस्ट थिंक, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा तबका, कितना बड़ा पॉपुलेशन आज भी उच्च शिक्षा के बाहर है।
अब मैंने आपके सामने डाइवर्सिटी का फिगर रखा कि कितने डाइवर्स लोगों को हम इंक्लूड कर पाए। अब थोड़ा सा हम स्पेसिफाई करते हैं उसको। जब हम बात माइनॉरिटी की चलती है तो जरा इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। हम कहते हैं कि मुस्लिम इज द मेजर माइनॉरिटी इन इंडिया, है ना। मुस्लिम इज द मेजर माइनॉरिटी इन इंडिया, लेकिन उनकी भी हालात क्या है जरा देख लेना। क्या है? ओनली 21 लाख मुस्लिम स्टूडेंट्स आर इन हायर एजुकेशन। ओनली 21 लाख। मेरे ख्याल से हमारे पॉपुलेशन का लगभग 15 से 18% पोर्शन मुस्लिम है। कम ज्यादा हो सकता है, आई एम टेलिंग यू 15 to 18%। अगर हमारी आबादी 140 करोड़ है तो उसका 15% लगभग मेरे ख्याल से 20 करोड़ के आसपास तो मुस्लिम आबादी है देश में, लगभग 20 करोड़ के आसपास है। लेकिन देख लेना, 20 करोड़ में से 21 लाख, इट इज नॉट 1% ऑल्सो। अगर ये 2.1 करोड़ होता तो ये 10% होता है 20 का, लेकिन ये 21 लाख है, मतलब नियरिंग 1% और लिटिल बिट मोर देन दैट। दिस इज द कंडीशन। देन अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स लाइक क्रिश्चियन, जैन एंड बुद्धिस्ट, ये सारे मिला के 9,05,000 है। हमारे पास अकेला स्टेट है पंजाब, जहां माइनॉर मेजोरिटी में है सिख। हमारे पास जैन पूरे इंडिया में डिस्पर्स है, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश की इस एरिया में बहुत सारे जैनिस हैं। और फिर बात करते हैं क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट की, वो तो बहुत माइनॉरिटी में है। लेकिन ये सारे मिलाने के बाद भी 9,05,000। और अगर ये मुस्लिम और अदर माइनॉरिटी में पकड़ते हैं तो ये सिर्फ 30 लाख होता है। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको हमने 2% रिजर्वेशन दे रखा है। क्या? 2% रिजर्वेशन है, लेकिन देख लेना उनका फिगर भी कितना है, 88,000 ओनली। अब होता क्या है हमारे लिए पीडब्ल्यूडी मतलब क्या? जिनकी डिसेबिलिटी विजिबल है, दिखती है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप है, लो विजन है, हार्ड हियरिंग है, ये मोटे मोटे। लेकिन अगर उसकी डिटेल में जाओगे तो अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज है, इंटेलेक्चुअल है, मतलब अलग अलग। आप कल्पना नहीं करोगे इतने वहां डिसेबिलिटी है। लेकिन उनका भी सेंसस हमारे पास है ही नहीं, लेकिन उनका नंबर है हमारे पास 88,000। और बाद में बात है जो हाल ही में एक सेक्शन ऐड हुआ है, वो है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और उसका नंबर हमारे पास 6,56,000 है। यह सबसे बड़ा है। और लास्ट में बात मैं आपको बता दूं, द नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन इंडिया विच कम फ्रॉम डिफरेंट 170 कंट्रीज, दुनिया के 170 देशों में से हमारे पास उच्च शिक्षा में सिर्फ 46,000 स्टूडेंट आर देयर। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर माइनॉरिटी एंड अदर ग्रुप्स। अब थोड़ी बात आगे करते हैं, वाई। अब हम बात करेंगे कारणों की, क्यों हमारे पास इतना कम एनरोलमेंट है डिफरेंट ग्रुप से। कारण कई हैं, और वो सारे कारण हम सब जानते हैं, इसमें कोई भी नया कारण नहीं है। सारे के सारे कारण हम जानते हैं। और सबसे पहला कारण हम जिसको कहेंगे, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। हम आप सिटी में रहते हैं, हमें तो थोड़ा बहुत पता है, लेकिन जो लोग दूर देहात में रहते हैं, जो लोग ट्राइब्स हैं,
उनको ये भी पता नहीं होता है कि हायर एजुकेशन होता क्या है। शायद आप भी कुछ लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो आपको पता होगा कि बच्चे कई बार आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद भी आपके डायरेक्टर को या प्रिंसिपल को मुख्याध्यापक ही कहते हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि गांव में 12वीं तक स्कूल है, वहां कर उसके आगे क्या करना है पता नहीं। या उसके बाद भी मैं कहूंगा कि हायर एजुकेशन लेने के बाद हमारे लिए क्या क्या अवसर प्राप्त हो सकते हैं, क्या क्या मौके आ सकते हैं, ये भी उन्हें पता नहीं। दिस इज वन रीजन। सेकंड रीजन जिसका संबंध महंगाई से है, कॉस्ट ऑफ परसुइंग हायर एजुकेशन एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। हम देखते हैं आजकल अलग अलग टीवी पे, अलग अलग सोशल मीडिया में ये बात हमेशा चलती है कि लोगों का इनकम कम हो रहा है और खर्चे बढ़ रहे हैं। योगेश जी, हमारे पास बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। हमारी आबादी, हमारी इकोनॉमी ग्रो तो हो रही है, लेकिन लोगों का इनकम कम हो रहा है। सी दिस इज द कंट्रास्ट। हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन सॉरी हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन लोगों का इनकम कम है। इसका मतलब यह है कि हमारी इकोनॉमी सिर्फ वर्टिकली बढ़ रही है, वर्टिकली दिस वे, नॉट हॉरिजेंटली। इसलिए कभी कभी पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि 10 लोगों के पास या 1% लोगों के पास लगभग 40% एसेट्स है। या जो कारपोरेट हाउसेस पहले से बड़े हैं वही बड़े बनने जा रहे हैं, लेकिन गली नुक्कड़ में के दुकान बंद होने जा रहे हैं। नौकरियां खत्म हो गई, अलग अलग कारणों से हो गई। मैं यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, अलग अलग कारणों से हो गई नौकरियां खत्म। जब मैं नौकरियां कहता हूं तो सिर्फ मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कह रहा हूँ, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट जॉब खत्म हो गए। कभी उसके लिए कोरोना आता है, कभी कभी बहुत सारे रीजन आ जाते हैं, डिमोनेटाइजेशन या फिर प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारी चीजें तो हुआ क्या है कि ऑन वन हैंड देर इज अ fall in the income, but on the other hand, there is a rise, there is a raise in the cost of higher education. कभी कभी तो मैं कहता हूं कि मेरा मेरा खुद का फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर मेरा मास्टर होने तक जितना खर्चा मेरे माता पिता ने खर्च किया, उससे ज्यादा खर्चा आज के पेरेंट्स बच्चों को नर्सरी में या क्लास 1 में खर्च करते हैं। इट रन इनटू लैक्स। सो ये जो कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन बढ़ रहा है, ये बहुत सारे लोगों के बस की बात नहीं। सो दैट इज वन रीजन। सेकेंड थिंग, जोग्राफिकल बैरियर्स एंड लैंग्वेज बैरियर्स। पहले बात करूंगा मैं जोग्राफिकल बैरियर्स की। मैं आपको बता दूं, उसी रिपोर्ट के अनुसार AICTE 2021-22 के अनुसार हमारे देश में 1 लाख एलिजिबल पॉपुलेशन के लिए 31 कॉलेजेस आर देयर। हमारा नेशनल लेवल एवरेज क्या है? नेशनल लेवल 1 लाख एलिजिबल पॉपुलेशन के लिए हमारे पास 31 कॉलेजेस हैं। महाराष्ट्र में ये फिगर थोड़ा सा ठीक है, 34 कॉलेजेस आर देयर। मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी ऑफ कॉलेज की। अब मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी, 1 लाख बच्चों के लिए कितने कॉलेज है। नेशनल लेवल पे ये परसेंट है 31 कॉलेज, महाराष्ट्र में कितना है? 34 कॉलेज है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बिहार में ये 10 है। वहां अगर महाराष्ट्र में 1 लाख बच्चों के लिए 34 कॉलेज अवेलेबल है, तो बिहार में 1 लाख बच्चों के लिए सिर्फ 10 कॉलेज अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है? बिहार में कॉलेजेस उतने नहीं है, अगर है तो वो शायद दूर दूर है। अगर जो स्टूडेंट है हमारे, जो यूथ है, अगर उनके पहुंच में अगर वो कॉलेज नहीं है, तो आना जाना, ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बढ़ जाता है। आप भी देख लेना,
बच्चा तब तक पढ़ता है जब तक उसकी शिक्षा की सुविधा उसके गांव में है। जैसे उसको गांव के बाहर जाना होता है, हम देखते हैं कि उसमें बहुत बड़ा ड्रॉप आउट आ जाता है। वह ड्रॉप आउट आ जाता है, ज्योग्राफिकल रीजन आते हैं, डिस्टेंस बढ़ता है। साथ ही साथ मैं बात करूं लैंग्वेज बैरियर की भी, ये भी इस बात को भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें दो प्रकार है, एक इंग्लिश एज ए बैरियर एंड सेकंड लैंग्वेज एज ए बैरियर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, हमारा हायर एजुकेशन कब शुरू होता है? जब बच्चा 12th पास करके आगे बढ़ता है। अब समय आप और हम जानते हैं कि हमारा 10th का बोर्ड हो या 12th का बोर्ड हो, उसमें इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। और हम ये भी जानते हैं कि जब तक एसएससी के सारे पेपर बच्चा क्लियर नहीं करता, वो 11th में नहीं जाएगा। उसी प्रकार जब तक कोई स्टूडेंट एचएससी के सारे पेपर क्लियर नहीं करता, तब तक वो फर्स्ट या सेकंड एरिया हायर एजुकेशन में नहीं जाएगा। और हम जानते हैं इंग्लिश नॉट बीइंग आवर मदर टंग, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश का वर्केबल नॉलेज ना होने के कारण 12th में फेल हो जाते हैं। और इसी कारण हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इंग्लिश के कारण उच्च शिक्षा में नहीं आ पाते। सो इंग्लिश इज हियर अ बैरियर, प्लीज रिमेंबर। इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन इन इंडिया to a large extent, English has become an obstacle, a speed breaker, I should say, a terminal point. उसके आगे बच्चे नहीं जा पा रहे। जैसे कि मेरे प्रोफाइल में सर ने बताया, प्रतीक जी ने, कि आई डिड माई मास्टर्स यूजी एंड एमफिल एंड पीएचडी इन इंग्लिश। लगभग 23-24 ईयर्स मेरी रोजी रोटी इंग्लिश के कारण ही चली है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश हमारे देश में उच्च शिक्षा में और उच्च शिक्षा में बच्चों को आने के रास्ते में एक रोड़ा बन चुकी है। प्लीज रिमेंबर, आप फिर देख लेना, शहरी बच्चों का इंग्लिश का नॉलेज लेवल और ग्रामीण बच्चों का या ट्राइबल बच्चों का लेवल डिफर हो जाता है। और बच्चे, हम कई बार, मैं दूसरे उसको अलग अलग शब्दों में कहूँ, इंग्लिश का जितना रिजल्ट होता है उतना ही उस कॉलेज का रिजल्ट हो जाता है। अगर 20% बच्चे कॉलेज में किसी फेल हुए, तो देख लेना उसमें से कम 17-18% बच्चे इंग्लिश में ही फेल हो जाते हैं। सो दैट इज वन बैरियर। सेकंड बैरियर इज डिफरेंट वन। अब होता क्या है सर, कि जिस रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल हम क्लास में करते हैं, हम जिसको प्रमाण भाषा कहेंगे, स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ दैट लैंग्वेज कहेंगे। अगर मैं मराठी की बात करूं, तो पुणे के सदाशिवपेट में एजुकेटेड लोगों द्वारा मराठी की जो वैरायटी बोली जाती है, उसको हम प्रमाण मराठी भाषा कहते हैं। आई रिपीट, पुणे के सदाशिवपेट या शुक्रवारपेट, पर शुक्रवारपेट, पुणे के सदाशिवपेट में रहने वाले जो लोकल निवासी है वहां के, उनमें भी जो एजुकेटेड है, वहां के नेटिव एजुकेटेड है, वो जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं उसको हम प्रमाण मराठी भाषा कहते हैं। वही भाषा आपके न्यूज चैनल में चलती है, वही भाषा आपके किताबों में चलती है, और वही भाषा, उसी वैरायटी का प्रयोग हम क्लासरूम में करने का प्रयास करते हैं। उसमें से बहुत सारे वर्ड हमारे देहात के बच्चे या ट्राइबल बच्चे नहीं पकड़ पाते। अब लगभग मैं पिछले 5 सालों से इस हिंदी बेल्ट में काम कर रहा हूँ, 5 साल हो गए लगभग मुझे। लेकिन जब मेरे पास कोई नेटिव हिंदी स्पीकर यहाँ आता है मेरे सामने और वो कुछ कहता है, मैं थोड़ी देर उनको सुनता हूँ, उनकी तरफ देखता हूँ और फिर कहता हूँ कि मुझे हिंदी में बताइए। मतलब व्हाट? मतलब ये इसका कि जिस हिंदी का वो प्रयोग करते हुए वो मेरे पल्ले नहीं पड़ती, मैं इसको पकड़ नहीं पाता हूं, मैं इसको समझ नहीं पाता हूं। द सेम हैपन्स विद मराठी ऑल्सो, विद आवर ट्राइबल स्टूडेंट, विद आवर विजय स्टूडेंट, विद आवर विमुक्त जनजाति स्टूडेंट्स।
तो इंग्लिश एक बड़ा बैरियर है, लेकिन उनके साथ साथ हम वर्नाकुलर का इस्तेमाल नहीं करते, दैट इज अगेन अनदर बैरियर। चौथी बात आती है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे हम हर बार सोचते हैं, हर बार डिस्कस करते हैं, पुअर एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल ऑफ आवर एजुकेशन प्रोग्राम्स। मैंने शुरू में आपको बताया हमारा ये एनरोलमेंट है। योगेश जी, हमारे 4,33,00,000 में से लगभग 80% बच्चे हमारे, 80% बच्चे हमारे सिर्फ यूजी प्रोग्राम में हैं। यूजी, वो पीजी के लिए जाते नहीं। और उसमें भी अगर आपको बाइफरकेट करना चाहोगे तो उसमें भी 40% स्टूडेंट हमारे हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेस में एनरोल्ड है। ट्रेडिशनल मतलब कौन से? बीए, बीकॉम, बीएससी। आपके इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में सिर्फ मेरे ख्याल से 12% है टोटल के। सो जिस देश के 80% में से लगभग 40%, मतलब आप देख लेना जो भी नंबर बनता है वो, 4,33,00,000 में से 80% मतलब आप कितना लगेगा वो? 32। और वो लगभग 15-20 लाख, मतलब 3.5 करोड़ बच्चे हमारे यूजी में, और उसमें से 40%, फिर मतलब लगभग हमारी 1.5 करोड़ के आसपास हमारा एनरोलमेंट हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज में है, बीए, बीकॉम, बीएससी। और आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इन कोर्सेस में, इन प्रोग्राम में एम्प्लॉयमेंट के पोटेंशियल नहीं होते। हम आज भी डिफाइन नहीं कर पाते कि बीए जिस बच्चे ने पूरा किया है वो किस जॉब के लिए एलिजिबल है, या कॉमर्स किया है उसको सीधा किस जॉब में जाना चाहिए, या साइंस को किस जॉब में जाना चाहिए। तो दिस वन रीजन, ये सबसे बड़ा रीजन है। आजकल कई बच्चे संसाधन होने के बावजूद भी दे आर नॉट रेडी टू गो फॉर हायर एजुकेशन। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, आप आप ऑटोनोमस कॉलेज में काम करते हैं, हो सकता है मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके पास एनरोलमेंट की कमी नहीं होती है, एडमिशन की कमी नहीं होती है। लेकिन जहां एडमिशन की कमी होती है वहां के टीचर लोगों को गांव गांव घूमना पड़ता है एडमिशन के लिए। और जब वे टीचर्स उस गांव में जाकर बच्चे के पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपका बच्चा 12वीं पास है, उसको आपने आगे क्यों नहीं पढ़ाया है? आगे मैं जो कह रहा हूं ना सर, उसने आपने उसको कई बार सुना होगा। उनका सिंपल आंसर आता है, पढ़ के भी क्या करेंगे, कहाँ नौकरी लगने वाली है। सिंपल आंसर होता है उनका कि पढ़ के भी क्या करेंगे, कहाँ नौकरी लगने वाली। दिस इज टुडे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द इंडिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट। आजकल हम देखते हैं ना, बच्चे एडमिशन तो लेते लेकिन क्लास में नहीं आते। ये इंडिफरेंस, ये कारण है इंडिफरेंस का। डिग्री ऐसी भी मिल जाती है, तब तो कोई छोटा मोटा काम कर लेगी। मतलब दिस वांट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, हमारे प्रोग्राम, हमारे कोर्सेस का एम्प्लॉयबल ना होना, रोजगार विमुख ना होना भी एक कारण है। पांचवा कारण है एडमिशन प्रोसेस। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? आजकल हमने बहुत सारी चीजें डिजिटल बनाई हैं, ऑनलाइन, डिजिटल नहीं कहूंगा मैं, ऑनलाइन बनाई है। इस पोर्टल पे जाओ, एनरोल करो, फिर आपको मेल आएगा, फिर आपका राउंड आएगा, फिर आपको ये करना है, फिर आपको वो करना है। आपके हमारे समय में क्या था? बच्चा 12वीं पास हो गया, उसके बाद 12वीं का मेमो है, टीसीए, वो सीधा किसी कॉलेज में जाता था, एडमिशन डन। उसको ऑनलाइन नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। आज भी आपको कभी कभी स्पॉट एडमिशन देने पड़ते हैं, लेकिन इन बच्चों ने वो एंट्रेंस दिया है। एंट्रेंस, एडमिशन प्रोसेस का ये बहुत बड़ा पार्ट एंट्रेंस हो चुका है। फिर उसका जनरल मेरिट लिस्ट, फिर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, फिर राउंड, और ये सारी चीजें उसको ऑनलाइन देखनी है।
हम और आप कर पाएंगे। सिटी में जो पेरेंट्स रहते हैं या जो बच्चों की सेकंड जनरेशन एजुकेशन में है वो कर पाएंगे। लेकिन जस्ट थिंक फॉर अ while, the students who are living in slums, the students who are living far away from urban localities, the students who are living in forests, what is with them? मुझे पता है कि आप में से किसी का एक काउंटर क्वेश्चन में जो हो सकता है कि इन बच्चों के पास मोबाइल है आई नो, लेकिन उसके डिजिटल डिवाइड को भी हमें समझना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरे घर में 4 मेंबर है, 4 मेंबर के पास 4 स्मार्टफोन है मेरे घर में, हो सकता है कि 5 भी हो। जैसे अफ्लुएंट क्लास में हर एक मेंबर के पास 4 व्हीलर होती है ना, उसी प्रकार हमारे मिडिल क्लास में कभी कभी 4 स्मार्टफोन है। लेकिन इस बात को भी हम नहीं नकार सकते कि कभी कभी एक फैमिली में सिर्फ एक स्मार्टफोन होता है। बिना स्मार्टफोन के आप ये ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर सकते। टच बटन वाला फोन से आप एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन नहीं कर सकते। उसमें आप ना मेल देख पाओगे, ना मेल सेंड कर पाओगे, ना कुछ कम्युनिकेशन होगा उसमें। उसमें भी एसएमएस के सिवा कुछ नहीं आता उसमें। एक बात। दूसरी बात, मोबाइल चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी तो लगती है। वी नो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, स्मार्टफोन चलाने के लिए हमें डेटा भी लगता है, कनेक्टिविटी भी लगती है। इस देश की ये हालात है योगी जी, हमें यहाँ आटा तो मुफ्त मिलता है लेकिन डेटा हमें खरीदना पड़ता है। मैं इसको सटारिकली नहीं कह रहा हूं, मैं इसको आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरलाइन द डिजिटल डिवाइड। और इस डिजिटल डिवाइड के चलते, इस डिजिटल इनइक्वालिटी के चलते हमारे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट या बहुत सारा एक वर्ग ये ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस नहीं कर पाता। और लास्ट ये कारण ये जो है, वन टॉप अप्रोप्रिएट स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज्म। इस बात को शायद हम अच्छी तरह समझेंगे। वन टॉप मतलब absence of appropriate student support mechanism। आपका कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज है, मतलब आपका प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट में हम देखते हैं कि हम सारे लोग काम में लगे रहते हैं। आपका एडमिशन कमेटी बना है, सेल बना है, बच्चे आएंगे, आप उसको सारी चीजें समझाओगे, फॉर्म कैसे भरना है, ये वो सारे बात। इट्स ओके, बट सी द थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, क्वाइट डिफरेंट। वहां बच्चों, कभी कभी वहां पेरेंट्स का और बच्चों का फुटबॉल हो जाता है। हम सारे बेटे, मैं आप सारे बेटे हैं, लेकिन हम मोबाइल में व्यस्त है। बच्चा आ गया, अरे उसके पास जा, अरे उसके पास जा। और उसके बावजूद भी उसकी कुछ समस्याएं हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, सोशल हो सकती है, इंटेलेक्चुअल, कोई भी समस्या हो सकती है। उसको एड्रेस करने के लिए, उसको एंटरटेन करने के लिए हमारे पास एक रोबस्ट मैकेनिज्म सिस्टम का ना होना, ये भी कारण है। शायद आप अमरावती में है, अमरावती फिर भी बेटर है, लेकिन आप थोड़ा सा अनडेवलप्ड बुल्ढाना जैसा जिला लीजिए या फिर चंद्रपुर जैसा जिला लीजिए। वहां देखते हैं कि हम कई बार देखते हैं, जहाँ जैसे कि मेरे सीवी में बताया कि मैं यहाँ आने से पहले 6 साल एक कॉलेज में प्रिंसिपल था और मेरा कॉलेज ग्राम पंचायत लेवल का था। एक मिनट। हाँ सर, जहां से ले आए थे वहीं छोड़ना है। हाँ, ठीक। सॉरी। तो वहां मैं देखता था कि कई बार एडमिशन के लिए बच्चा नहीं आता था या लड़की नहीं आती थी, उसके पेरेंट्स आते थे। कभी भाई आता है, कभी पिताजी आते हैं, कभी हस्बैंड आता है, कभी माँ आती है, कभी बड़ी बहन आती है। फैमिली मेंबर्स आर देयर। और इन मोस्ट केसेस इन माय प्लेस द पेरेंट्स यूज टू बी इलिटरेट। ऐसे कंडीशन में हमारे कॉलेज में या आपके हमारे कॉलेज में एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत जरूरी है।
स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज्म का जरूर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई जगह ये सिस्टम ना होने के कारण भी डिस्करेजमेंट हो जाता है. सो दीज आर द रीजन व्हाई देर इज नॉट मच इंक्लूजन. अब बात करते हैं तीसरा सेगमेंट की तरफ जाते हैं हम कि एनईपी गवर्नमेंट और एनईपी क्या एक्सपेक्ट करती है, एनईपी के पास क्या प्रोविजन है, या एनईपी इस डाइवर्सिटी को इंक्लूड करने के लिए क्या क्या करने की बात करती है. प्लीज रिमेंबर. और यहाँ जितने भी मैंने लिए हैं ना, ऑल दिस मैकेनिज्म आई हैव टेकन फ्रॉम द एनईपी डॉक्यूमेंट. जो हमारा 60 पेज का डॉक्यूमेंट है इंग्लिश का, वो सारे मैंने वहीं से लिए हैं. अब क्या कहती है, earmarks suitable fund for the education of SEDGs. SEDG मतलब सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, सामाजिक आर्थिक दृष्टया वंचित घटक. इन सिंपल वर्ड्स, पुअर बॉयज एंड गर्ल्स who are financially weaker, at the same time they are not socially advanced also. ये पॉलिसी बात करती है कि वी हैव टू रिजर्व सम फंड्स फॉर द एजुकेशन ऑफ सच ग्रुप्स. मैं इस बात को मैं यहां दोहरा दूं, ये जो ऐसी डिसीज है ये सिर्फ किसी एक कास्ट में नहीं है, एक रीजन में नहीं है, एक रेस में नहीं है. दे आर डिस्पर्स्ड ओवर डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट ज्योग्राफिकल, डिफरेंट लैंग्वेज एंड सो एंड सो फोर्थ. तो ऐसों के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड की व्यवस्था करने की बात करती. दूसरी बात, यहाँ एक बात यहाँ जोड़ दूं मैं, द पॉलिसी एक्सपेक्ट्स कि स्कॉलरशिप शुड बी गिवन बाय द प्राइवेट एंड philanthropist also. Please remember. ये पॉलिसी एक्सपेक्ट करती है कि हमारे जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, ये जितने भी लोग हैं, 1 मिनट, ये जितने भी लोग हैं वो सामने आए और ऐसे बच्चों के लिए 1 मिनट, ऐसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप ऑफर करें. आप कहोगे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती नहीं है क्या? देती है. इट इज टू स्मॉल, इट इज टू लिटल. तो गवर्नमेंट चाहती है कि, गवर्नमेंट तो प्रयास कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस है और साथ ही साथ फिलंथ्रोपिस्ट, जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, they should come forward. This is one expectation. Second, set clear targets of SEDGs. ये भी बात करती है. टारगेट रखो कि इस साल हमें इस रीजन में ये बच्चों का एडमिशन बढ़ाना है, इन बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाना है. हम जानते हैं कि किस जिले में, किस एरिया में ट्राइबल ज्यादा है, मुस्लिम ज्यादा है, एससी ज्यादा है. ये तो हमारे पास एनएससी में डाटा है, ये तो डाटा है. ट्राइबल्स का, एससीज का डाटा है. और वोटर लिस्ट भी हमें कई बार हेल्प करती है उस एरिया का ज्योग्राफी, डेमोग्राफी समझाने के लिए. तो ये पॉलिसी कहती है कि अब हमें टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि हमें इस साल इस स्टेट के इस जिले में इस ग्रुप का एनरोलमेंट बढ़ाना है. सेट क्लियर टारगेट. सेकंड थिंग, एनहांस जेंडर बैलेंस इन एडमिशन टू HEIS. ये भी सही है. 2.26 lakhs and 2.26 करोड़ एंड 2.07 करोड़, 19 लाख का डिफरेंस आज भी हमारे पास जनरल एडमिशन में है. तो ये बहुत बड़ा गैप है. 19 लाख बच्चियां कम होना है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा. देन हाँ, इस बात को जरा, establishing more universities and more colleges in aspirational districts by establishing special educational zones. मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि महाराष्ट्र में 34 कॉलेजेस हैं, बिहार में 10 है. लेकिन ये मत समझना कि महाराष्ट्र बहुत अच्छा है. महाराष्ट्र से अच्छे हालात एजुकेशन को लेकर तमिलनाडु में है,
केरला में है, कर्नाटक में है, कुछ हद तक तेलंगाना में भी है। मैं यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर वहाँ पॉकेट छोटा होता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज देयर। तो it means that our population is growing every year, but our colleges and university are not growing in that proportion. तो ये पॉलिसी कहती है कि अब हमें हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से, एलिजिबल पॉपुलेशन के हिसाब से हमें हमारे कॉलेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटीज बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही साथ SEZ, हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो सुने थे, लेकिन यहाँ बात होती है स्पेशल एजुकेशन जोन की, SEDG के लिए, कि कोई ट्राइबल एरिया है, वहाँ बहुत बड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन है, लेकिन कॉलेजेस कम है, और जो कॉलेजेस है उनका जोग्राफिकल डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये पॉलिसी कहती है कि SEZ हमें बनाने पड़ेगी। जिस बुंदेलखंड में सागर है, इस ये बुंदेलखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मतलब मैं तो कहता हूं कि इन इन इंडिया, apart from Chhattisgarh and Jharkhand, perhaps I'm not sure, perhaps Madhya Pradesh is the third state which is having largest tribal population. मेरे पास ये आधिकारिक फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह पा रहा हूँ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आर आइडेंटिफाइड एज ट्राइबल स्टेट्स, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से हो सकता है कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी। यहाँ कुछ जिले ट्राइबल्स के लिए आरक्षित है, मतलब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। अब शायद ऐसे SEDG के लिए अलग से कॉलेज बनाने पड़ेंगे, मास्टर्स करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट पॉलिसी से। देन डेवलप सपोर्ट हाई क्वालिटी HEIs इन दैट टीच इन लोकल एंड इन लैंग्वेज है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, लैंग्वेज बैरियर बन रहा है। कोशिश ही की जाए कि सारे के सारे उच्च शिक्षा के प्रोग्राम इंडियन लैंग्वेजेस में सिखाए जाए और लोकल लैंग्वेज में सिखाए जाए। योगी जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ बुंदेली वैरायटी है हिंदी की, बुंदेली वैरायटी, इसको बुंदेलखंड भी कहा जाता है। प्लीज रिमेम्बर, मैं आपको एक कंट्रास्ट बताता हूँ, एक मैं आयरनी बताता हूँ। ये बुंदेलखंड का एक अनडेवलप्ड एरिया है, रीजन है, जहाँ बुंदेली भाषा बोली जाती है। जब कोई बुंदेली में बात करता है तो मैं उसको पकड़ नहीं पाता हूँ, इतनी फास्ट और अलग अलग बढ़ते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय में जितने भी टीचर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर फ्रॉम यूपी। मैं इसको एक फैक्ट आपके सामने रखा हूँ, मैं इस पॉलिसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। नाउ द वैरायटी ऑफ हिंदी आवर टीचर्स स्पीक इज नॉट लेजिबल टू आवर ट्राइबल स्टूडेंट्स और बुंदेलखंडी स्टूडेंट्स। तो ये पॉलिसी कहती है इंग्लिश तो छोड़ो, आपको सारे टेक्नोलॉजी पर हिंदी में पढ़ानी पड़ेगी, आपके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ानी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको आपके लोकल भाषा में भी पढ़ाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द पॉलिसी सेड। देन प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड स्कॉलरशिप इन SEDGs बाय पब्लिक एंड प्राइवेट टीचर्स। हालांकि इस बात को हमने पहले भी लिया है। अगर आपने नोट किया होगा तो ये पॉलिसी शिक्षा में प्राइवेट पार्टनरशिप को ज्यादा स्कोप देती है। जैसे कि मैं आपके सामने डेटा रख रहा था, 473 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आज भी है, 21-22 में थी, हो सकता है कि अब वो 500 क्रॉस कर चुके हो। NEP में प्राइवेट पार्टनर्स को, या मैं कहूंगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, प्राइवेट कॉलेजेस को ज्यादा स्कोप मिलने जा रहा है। और वो चाहते हैं कि जहां गवर्नमेंट नहीं कर पाती, जहां गवर्नमेंट नहीं जा पाती, वहां प्राइवेट लोग जाए। बात में जैसे कि मैंने बताया आपको, कंडक्ट आउटरीच प्रोग्राम फॉर हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। हाँ, ये भी बात जरूरी है। जहां जानकारी के अभाव में कुछ बच्चे नहीं आ पाते, वहां के बच्चों को पहुंचने के लिए
हमें आउटरीच प्रोग्राम हाथ में लेने पड़ेंगे। अगर वो हमारे पास नहीं आ सकते तो हम उनके पास जाएंगे। और जैसे कि हाई क्वालिटी की बात होगी, अब थोड़ा आगे जाते हैं। मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूं, हालांकि एक है लेकिन द सेम थिंग्स आर देयर। अब ये नाउ आई मीन द लास्ट पार्ट हियर। I began with definition of diversity, what diversity is there. Then I moved to what is the present status of our higher education enrollment. फिर बात की मैंने what are the reasons. Then I moved to what provisions are there in NEP about the diversity. Provision बहुत अच्छे दिखते हैं हमें. They are very wonderful to see. But finally, we have to acknowledge one thing. हम आपको एक बात को यहाँ मानना पड़ेगा कि ये रहा आसान नहीं है. इतने सारे डाइवर्स ग्रुप को साथ में लाना, इंक्लूड करना, ये बात उतनी आसान नहीं है जितनी बात वो हमें पेपर पे दिखती है. सो लेट अस डिस्कस हियर व्हाट चैलेंजेस आर देयर. सबसे बड़ा हमारा चैलेंज क्या है? और सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास हमारे बहुत बड़े तबके का डेटा ना होना. हमारे पास उनका डेटा ही नहीं है. ओबीसी कितने हैं पता नहीं, मुस्लिम कितने हैं पता नहीं, पीडब्ल्यूडी कितने हैं पता नहीं. मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप बड़ी शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपके शादी में कितने लोग आने हैं यही अगर आपको पता ना हो तो आप खाना कितने लोगों का बनाओगे. द सेम थिंग हैपेंस हियर. चलो मान लिया कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिव हो जाती है, मान लिया कि प्राइवेट पार्टनर भी दे आर रेडी टू हेल्प, बट इफ वी डोंट नो what is the size of our OBC eligible population, if we don't know what is the size of our minority eligible population, if we don't know what is the size of our PWD eligible population, how are we going to address their issues? तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास इन लोगों का डेटा नहीं है. दैट इज वन थिंग. सेकंड थिंग, जैसे कि मैंने कहा रिलीजियस लिंग्विस्टिक वॉट एवर द थिंग्स आर देयर. दूसरी बात, शायद इस बात को आप मुझसे डिसएग्री करेंगे, सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फॉर गर्ल्स, माइनॉरिटीज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स एंड फॉरेस्ट स्टूडेंट्स. देख लेना, मैं एग्जांपल देता हूं आपको. पिछले साल बीएचयू में कुछ लड़कियों का गैंग रेप होकर कुछ हो गया है, या फिर कल पिछले 2 महीने पहले कलकत्ता में एक डॉक्टर के, ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये हुआ. ये घटना संख्या में बहुत कम है, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन आजकल मीडिया के जमाने में एक घटना का इतना बड़ा रूप दिया जाता है कि वो सुनकर हमारे जो माता पिता हैं उन बच्चों के, वो घबरा जाते हैं. और हम जानते हैं एंड दे कम टू कंक्लूड दैट कि भाई हमारे लड़कियों के लिए माहौल ज्यादा ठीक नहीं है. हम देखते हैं, देख लेना कि हाई स्कूल के बाद हमारे माता पिता लड़कियों को 11वीं 12वीं को भेजने के लिए तैयार नहीं होते, और 12वीं भी हो गई तो हायर एजुकेशन के लिए भेजने के लिए ज्यादा तैयार नहीं होते. क्यों? ये जो सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, या मैं कहूंगा कि सोशल सिक्योरिटी की बात है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है. सेम थिंग हैपेंस विद माइनॉरिटी स्टूडेंट ऑल्सो. सेम थिंग हैपेंस विद माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑल्सो. सेम थिंग हैपेंस विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट ऑल्सो. जब हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में पढ़ने आते हैं तो वी नो दैट आवर नॉर्थ ईस्टर्न पीपल आर डिफरेंट बाय अपीयरेंस. वो हम आपके जैसे दिखते नहीं, वो थोड़ा सा ज्योग्राफी अलग है तो दे लुक लाइक नेपालीज और चाइनीज, दैट वे. तो ये मेन स्ट्रीम के जो बच्चे हैं ना, वो उनको इक्वली ट्रीट नहीं करते. रैगिंग एंड अदर थिंग्स आर देयर. तो ये माहौल भी हमें कभी कभी दिक्कत देता है. एंड द सेम थिंग आई कैन से फॉरेन स्टूडेंट ऑल्सो. कभी कभी फॉरेन स्टूडेंट को भी टारगेट किया जाता है. हम देखते हैं कि
किसी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा नमाज पढ़ रहा था इसलिए उसको टारगेट किया गया है, या किसी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा प्रे कर रहा था उसको टारगेट किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द ओनली रीजन, नो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इट में भी वन ऑफ द रीजन। मैं आपको एक बात बताऊं सर, जैसे कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है फॉरेन स्टूडेंट को लेकर, 19-20 में हमारे पास 50,000 स्टूडेंट थे फॉरेन के, 20-21 में 48,000 हो जाते हैं, और 21-22 में 46,000 हो जाते हैं। एवरी ईयर देर इज अ फॉल ऑफ 2,000 स्टूडेंट। वाई? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आई एम रिपीटिंग इट, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज ओनली वन ऑफ द रीजन, रीजन में भी डिफरेंट। एंड मैं कहता हूं कि ये भी हमारे उच्च शिक्षा में एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है कि वाई देर इज अ फॉल इन द फॉरेन नंबर ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट। तो ये भी कारण है। फिर फाइनेंशियल कंसर्न, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा कारण क्या है? रुपया। आज हमारे गवर्नमेंट के पास इतने संसाधन नहीं है ये सारे लोगों को इनक्लूड कर पाए। मैंने शुरू में कहा कि 77-78 साल के बाद भी हम सिर्फ 28% बच्चों को ले आए हैं। 77-78 साल के बाद, इतने बड़े कॉलेजेस, इतने बड़े यूनिवर्सिटी होने के बाद, अब इससे बड़े यूनिवर्सिटीज क्या बढ़ेगी, कितने बढ़ेंगे? बट आबादी के साथ तो यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ेगी, कॉलेज नहीं बढ़ेगी। हाँ, प्राइवेट कॉलेज बढ़ सकते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बढ़ सकती है, लेकिन योगी जी आप जानते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कहाँ बनेगी? अर्बन एरिया में बनेगी। आप देख लेना, आपके विदर्भ की स्टडी करना, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको नागपुर में मिलेगी, उसके बाद अमरावती में मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि वर्धा में होगा या बुल्ढाना में होगा या कहीं और होगा, आई डोंट थिंक सो। एक आधा अकोला में मिल सकता है आपको। ओनली 2 cities इन विदर्भ, मराठवाड़ा में ओनली औरंगाबाद, पुणे मुंबई में तो बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जहां जरूरत है, अंदर आ जाना, मैं सेशन अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। तो अब होगा क्या? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट में पैसा नहीं है कहना गलत होगा, लेकिन संसाधन सीमित है। ऐसे हालात में प्राइवेट पार्टनर बढ़ेगी, लेकिन प्राइवेट पार्टनर कॉलेज कहाँ बनाते हैं? सिटीज में। बहुत सारे विश्वविद्यालय प्राइवेट मुंबई में है, पुणे में है, औरंगाबाद में हम एक बना है, नागपुर में 2-4 हो गए, अमरावती में 2-4 हो गए, लेकिन 2 मिनट रुकना, लेकिन जहां बनना चाहिए वहां नहीं बनते। दिस इज वन ऑफ द इशू एंड लास्ट प्रॉब्लम हियर। जैसे कि हमने इसकी बात की थी कि हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन बच्चों को अट्रैक्ट कैसे करें हम हायर एजुकेशन के लिए, और अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा जरिया होता है एम्प्लॉयमेंट का टेम्पटेशन, प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मेरे सीवी में पढ़ा कि आई डिड माई यूजी एंड पीजी इन इंग्लिश। वाई? सिंपल सा रीजन था कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि चलो, मैं अगर इंग्लिश में बीए या एमए करता तो मुझे कम से कम स्कूल टीचर का जॉब मिलेगा, कम से कम मैं ट्यूशन लेके भी अपना काम चला लूंगा। देयर वाज सम होप रिगार्डिंग दैट, बट टुडे इवन दैट होप इज टाइम। आप तो ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग एंड बाकी कोर्सेज में काम करते हैं, आप जानते हैं कि आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज के एम्प्लॉयमेंट की क्या हालात है। इंजीनियर की बात मैं क्या करूं सर, आईआईटी और आईआईएम के बच्चे भी परेशान है आजकल। जहाँ एडमिशन पाना मतलब विद द गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गारंटी ऑफ फैट पैकेज। लेकिन आज हालात ये है, इवन दो स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर आईएम की आईआईटी की बात यह है तो वी कैन थिंक what could be the condition of our traditional courses. So employability of our courses is the biggest issue. So thank you very much. These are the things that I wanted to put you. Let me summarize what I said so far. सबसे पहले I defined what diversity is. Second, I I put before you what is the status of our inclusion. Thirdly, I talked about what are the reasons of diversity, or I mean to say non-inclusion of diversity.
Fourth thing I put before you, what NEP talks about, the measures to be taken, and finally I discuss or I presented before you, मैंने आपके सामने ये भी बात रखी कि what are the challenges. If those challenges are there, it is difficult to say. Thank you very much for giving me patient listening. सबसे बढ़िया तो मैं योगेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद मैं 5-10 मिनट के आगे नहीं जा पाता. तो थैंक यू वेरी मच. अगर मैंने जो आपसे कहा है, आपके सामने रखा है, उसको लेकर अगर आपका कोई डिसएग्रीमेंट है या उसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम. टाइम भी हो चुका है. आई डोंट नो, आई टुक 5 more minutes. यस प्लीज. थैंक यू सर. कोई सवाल नहीं है? सवाल तो ऐसे मतलब बेसिकली आपने जो बातें कही है वो तो इम्पोर्टेंट लगी. मतलब डिसएग्री होने का चांस ही नहीं था वहाँ. नहीं. कि whatever the things are there, most of you agree with that, है ना? यस सर. तो थैंक यू वेरी मच. लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग. मैं भगवान में भरोसा तो नहीं करता, लेकिन कुछ लोग करते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मदेवा होता है कोई तो भी, उसने जो कहा, उसने जो लिखा, वो फाइनल वर्ड होता है. बट आई एम ऑर्डिनरी मैन. व्हाट आई सेड इज नॉट द फाइनल वर्ड. एक ही चीज को देखने के अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं. हो सकता है कि जिस चीज को मैं मेरी ओर से देख रहा हूं, आप उसको अलग तरीके से देख सकते हैं. एंड यू कैन एनरिच योरसेल्फ आल्सो. तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट मी अलाउ टू लीव. और एक बार मैं हमारे आतिक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और हमारे प्रतीक देशमुख जी और बहुत जो भी यहाँ MMTTC से जुड़े हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. थैंक यू वेरी मच. जस्ट 1 minute सर. ओके प्लीज. हाँ, आज इस सत्र में स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन में आचार्य बेदरे सर ने जो हमें बहुमूल्य मार्गदर्शन किया है, अपना समय निकालकर सर्व समावेशक शिक्षण के ऊपर, हम उनके प्रति हमारी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. सर, आपने इस सत्र में हमें ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रदान करते हुए आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन में हमें इस विषय को और भी गहराई से समझने का अवसर प्रदान किया. आपने जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला वह हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है और निश्चित रूप से सर हमें शिक्षा को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने में सहायता करेंगे. आपका अनुभव ये दिस इज बुकिश लैंग्वेज सर. दिस इज बुकिश वन. हमारे जैसे शिक्षार्थियों को अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे द्वारा, आपके द्वारा दी गई सलाह को हम अपने कार्यों में अमल लाने का प्रयास करेंगे सर जरूर. नमस्ते बोयपट्टी सर जी. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. इस सत्र की जो समाप्ति है सर, एक शेर से करना चाहेंगे कि मंजिल से ज़रा कह दो कि अभी पहुँचे नहीं हैं हम, मुश्किल ज़रूर है मगर ठहरे नहीं हैं हम. सर डेफिनेटली सर कि हमारे जो प्रयास है वो अथक व अश्रमित चलते ही रहेंगे, और इस शिक्षा नीति की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये अचीव करने के लिए हम सतत कार्यरत रहेंगे. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आई एम लिविंग. यस, थैंक यू सर. हेलो प्रोफेसर अप्पाराव सर. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Shall we continue, sir? If you could. Yeah, you can. So, participant, once again, good afternoon. Now we are continuing with our next session. Sir, sorry for the delay for 5 or 10 minutes. That's okay. Yeah. So, friends, you know that Professor Apparao sir very well, and now sir will conduct the today's session on the outcome-based education curriculum designing. You know that since last 2 or 3 years we are continuously engaged in the designing of curricula with respect to this national education policy, and we have ultimately drafted it and we have started its implementation. But the friends, what NEP has accepted, NEP has given the guidelines of outcome-based education, and learning outcome guidelines are released by the UGC. So whatever may be the curricula we have designed, that should be some outcome based, and when we are evaluated our student, there should be achieve whatever may be the targeted we have PO PSO we have set, that should be achieved in that way and in that spirit. So we have organized this session.
Sir, I again extend my warm welcome to you, sir, to this session and request you to start with your session. Sir, please. Thank you, Professor Muhammad Atif, for welcoming the participants and the resource person. At the outset, I thank Professor Muhammad Atif for inviting me to exchange a few of my thoughts on this very, very important topic, outcome-based curriculum design. See, today, all the universities and colleges are implementing outcome-based education. There is no choice. In outcome-based education, you have three components. One is curriculum design. The second component is outcome-based teaching learning strategies. We have to modify, we have to reorient totally our teaching learning strategies. We have to unlearn the traditional teaching learning strategies that is lecture-based. We have to involve more and more active learning strategies. We have to reorient regarding assessment strategies also. So outcome-based curriculum design, outcome-based teaching learning strategies, and outcome-based assessment strategies. All these three components together define outcome-based education. Today, in this session, I shall devote myself only to curriculum design because 90 minutes is sufficient only to discuss outcome-based curriculum design, and the participants may belong to, some of them, engineering, management, pharmacy, architecture, arts, science, commerce, humanities, from different disciplines. Therefore, I shall discuss the two frameworks, curriculum frameworks, one given by UGC and the other one given by NBA, National Board of Accreditation for Engineering and Management Programs. I have two requests. One request is kindly mute your mics till the question answer session. You will be given opportunity for asking questions. Till then you mute your mics, because day before yesterday in the session, there was disturbance from one lady participant for a few seconds. She unmuted and she was going on talking in Marathi. So that causes disturbance for all the participants and the resource person. That is my sincere request to all of you. And my second request is, there are different terms in the lecture which you may have heard, but the concepts may not be clear, totally clear. So please listen to the lecture with total attention in view of its importance. Without understanding how to design curriculum in outcome-based format, you will have a very poor curriculum, which is not a standardized curriculum as per the framework given by UGC and NBA. So I request you to pay total attention and note down questions in your notebook, which you can ask during the question answer session. So now I share my PPT and explain the topic. This is outcome-based curriculum design. First of all, let us understand what is outcome-based education very clearly, without any ambiguity. Always, whenever we talk
about outcome-based education, the quotation, the definition given by Spady is always referred to. Outcome-based education means clearly focusing and organizing everything in an educational system around what is essential for all the students to be able to do, successfully at the end of their learning experiences. There are two terms in the definition which assume great significance. One is all the students, not one or two students, not a few students. Majority of the students, about 80% of the students, must be able to do successfully. When I say must be able to do successfully, apply, analyze, evaluate, and create in terms of Bloom's taxonomy. And then at the end of significant learning experiences, that means as teachers, it is our duty to provide them significant learning experiences inside the classroom and outside the classroom. That is very important, sir. It is not giving lecture and leaving the hall. Significant learning experiences in terms of activities by the students in the classroom and in the form of assignments outside the classroom on a continuous basis. Learning experiences is a very, very big word pedagogically, right? This means we always start with a clear picture of what is important for the students, what is important for the students to be able to do. We find out by means of workshops, all that at the departmental level, inviting the external academicians. Then we organize our curriculum, our instruction, and assessment to ensure that the learning ultimately happens. That means outcome-based education system aims at, number one, developing a clear set of learning outcomes around which the entire education can be focused. Learning outcomes, essential learning outcomes by the students. Secondly, we must establish the conditions and opportunities within the educational system. When I say conditions and opportunities, the infrastructural facilities, the digital classrooms, the modern laboratories, the modern library, the playgrounds, all that infrastructural facilities, and also opportunities to learn in various disciplines, including, that means in all the possible disciplines which constitute the curriculum. So then, what exactly are the outcomes? We should have total clarity about it. Outcomes are clear learning results that as teachers, we try to see that the students demonstrate at the end of significant learning experiences. They are clear learning results. Outcomes are what learners can actually do with what they know and have learned. They are the tangible applications of what has been learned. That means outcomes are actions and performances that reflect the learner's competence in using the information, the content, the information, the ideas and tools successfully. My dear friends, all of us should have clarity in outcomes. What exactly we mean outcomes? This is the concept
of learning outcomes. Then outcome-based curriculum design. So far, we have discussed what is outcome-based education, and then what exactly are the learning outcomes. In order to design curriculum in outcome-based approach, we should understand the revised Bloom's taxonomy, because that is accepted all over the world as the basis for writing the learning outcomes at different levels, at different cognitive levels, at different learning levels for a given course, for any given course. So this is, now I am going to explain to you revised Bloom's taxonomy, revised Bloom's classification of levels of mastery of learning. The lowest level is remember level. Level 1, remember level. Bloom defined this level as remembering without understanding the subject. The student can recite several definitions without any understanding. Right? That is the remember level, rote learning. That is the lowest level of learning according to Bloom. The next higher level is understand level. Ability to understand the subject and explain in one's own words with examples, with different examples other than what has been given in the classroom. That is the second level, next higher level than remember. The next higher level, apply level. The student will be able to apply the learned concepts to unknown contexts. That is apply level. Then analyze level. The students will be able to break the information into its constant parts and determine how the parts relate to one another and to overall structure. Analyze level, analysis of case studies, for example, it is higher than apply level. Then evaluate level, the students will be able to evaluate different designs, models, procedures, softwares, and judge which one is superior to the others. My dear friends, at evaluate level, there is judgment part. There is role of judgment also at evaluate level. Then evaluate a given product as per the existing standards and benchmarks. Then the highest level is create level. The students will be able to synthesize new materials, new products, generate new ideas, new models, new softwares, new designs of a product, write new poetry, all that, create level, creating new knowledge. That is the highest level. There is a hierarchy, sir. In these 6 levels, there is hierarchy. There is a ranking. The remember is the lowest level, then understand level, then apply level, then analyze level, then evaluate level, then create level. So we should have total clarity about these 6 learning levels when we formulate the course learning outcomes. So this Bloom's classification of levels of mastery of learning helps teachers to plan different levels of mastery of the subject, which must be achieved by the students according to teachers' expectations. That is learning outcomes for any given course. It also helps the students to know as to what levels of mastery they should learn. Accordingly, they will put in necessary time and use the related materials and try to achieve the learning outcomes. As these levels of mastery are related to thinking process, these are called cognitive levels. Cognition means thinking related to mental process, that is cognition. So these are all called, 6 levels are called cognitive levels.
So then remember, understand, apply. They are the most basic. Therefore, they are called lower order thinking skills, lots. Whereas apply, analyze, evaluate, and create are complex skills, complex levels. Therefore, they are called higher order thinking skills, higher order thinking levels, arts. So now, my dear friends, after explaining different levels of learning as defined by Bloom, now I am explaining to you at each cognitive level, what are the action verbs to be used? For example, cognitive level, remember level. What are the action verbs when we write the learning outcomes? Always when we write the learning outcomes, we start with action verbs. Action verbs, define, so and so, state, list, name. These are only examples. The exhaustive list is given by Bloom that is available in the internet. I am only giving the examples. Then understand level, cognitive level, explain. The action verbs are explain, classify, describe, discuss, give examples, etc. Then apply level, apply, interpret, solve, show, predict, employ, etc. Then analyze level, analyze, calculate, compare, differentiate, etc. Then evaluate level, evaluate, judge, conclude, assess, etc. Then finally create level, create, design, develop, devise, and synthesize, etc. So here I have mentioned cognitive levels. Against each cognitive level, what are the action verbs used in writing the learning outcomes? Those are given. Dear friends, you can observe here two important points. Against remember level, in the action verb, you do not find the word remember. The examples are define, state, list, name, but remember is not included. Similarly, understand is not included. Explain, classify, etc. Understand is not included. Whereas for apply, apply is included. Analyze, analyze is also included. Evaluate, evaluate is also included. Create, create is also included. Why? Remember and understand cognitive levels. At these cognitive levels, these words are not listed under the action verbs. This is the reason. This is a common error which most of the faculty in most of the universities, if you go through their websites, they commit this error. You should not use remember as action verb, understand as action verb. Why? Because when you do assessment, when you give questions, do you give question remember so and so law? No. Define so and so. Do you give a question understand so and so procedure? No. You give a question explain so and so procedure. Right. Therefore, please do not use remember and understand as action verbs. They are the cognitive levels. They are the learning levels. But action verbs are given only those have to be used. Then, for the benefit of faculty, because I conducted several workshops, more than 100 workshops, initially, while conducting the workshops, I used to give lectures in the morning, and in the afternoon, I used to ask them to write the course learning outcomes for a given course they are teaching. Though in the morning, they said it is very clear, they have understood everything.
But in the afternoon, in the hands-on session, they committed so many mistakes, so many errors. Then I thought it is better I develop some guidelines, I formulate some guidelines for the benefit of the faculty. So after I have given these guidelines in the morning session, then in the afternoon, by looking at these guidelines, they were able to draft the curriculum, the course learning outcomes of their course very comfortably. There was no error at all. So since then, I have been sharing these guidelines which I have prepared with all the faculty in the online courses. So please follow the guidelines very carefully. Sir, the first guideline is write the learning outcomes in terms of what the learner does, right? What the learner does after undergoing this particular course, what the learner does, that is important. Second guideline, every time you need not repeat. After completing this course successfully, the students will be able to, etc. Every time you need not repeat. Therefore, you can use common stem only once. What is that common stem, sir? After completing this course successfully, the students should be able to, or the students will be able to, both are okay. This is the common stem. Only once you write this. Then you start with the action verb of the performance part, and then you can write the learning outcomes. I shall show you the examples also. Then the third guideline, the learning outcome consists of 3 parts. One is performance part, second one is condition part, third one is criterion part. What is performance part? It includes action verb and the subject content. That's all, nothing else. The action verb and subject content. That is performance part. Performance part must be there in all the course learning outcomes. Then what is the condition part? Suppose you are expecting the students to use a database. Right? You are expecting the students to perform the action, to perform learning in certain contexts. That is called condition part. Using a particular resource only, they will be able to perform the action. In certain context only, they will perform the action. That is called condition part. Then what is criterion part? How well they perform. How well they apply the learned concept. The quality criterion. Criterion part means quality parameter. That means the students will be able to write a coherent paragraph without any mistake. If you mention, the students will be able to write a coherent paragraph. That is only performance part. Right? Action verb, coherent paragraph is the subject content. Suppose if you mention without any mistake, that means that is the quality parameter you have included there. You wanted them, the students. Suppose you want the students to develop an algorithm without any error. That without any error is the quality parameter. That is the criterion part. So it depends upon the course, upon the kind of learning, course learning outcomes you want to develop. In all the course outcomes, performance part must be there. Condition part and criterion part wherever necessary in order to give complete meaning to the course learning outcome. Right, sir?
This is the third guideline. Fourth guideline. The learning outcome must be achievable by majority of the students, by 80% of the students. That means during the first year of undergraduate programs, you should not write the learning outcomes at evaluate level and create level, because majority of the students will not be able to achieve. A few students may be able to achieve. But Bloom mentioned always we should aim when we write the learning outcomes to see that majority of the students achieve, 80% of the students. Therefore, I advise all of you, when you write the course learning outcomes, up to analyze level, apply analyze level, you can always write. But be careful. Exercise caution when you write at evaluate level and create level. In projects, mini projects or major projects, yes, you can write evaluate level and create level also. Okay, in design courses, in the final year, yes. Level 3 courses, yes, you can write at create level and evaluate level, but not level 1 course. You confine yourself only up to apply and analyze levels. This is very important. The learning outcome must be achievable by majority of the students. Then fifth one, the learning outcome must be measurable. That means you should be able to assess the learning outcome. That is the meaning when I say it must be measurable. You must be able to give a question using that particular action verb. Therefore, you avoid these, don't use these action verbs like remember, understand, know, acquire, appreciate, think, believe, realize, gain, etc., which are not measurable. This is a common error, sir. I have gone through the websites of many universities in the country. This is a common error. Therefore, I have put it in the guideline. Avoid such common errors so that your course outcomes are error-free. Then sixth guideline, fix the learning level first. What are the learning levels, sir? Remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. These are the learning levels. Fix the learning level first. Then according to the learning level, use the suitable action. Okay. Then seventh one, start writing each learning outcome with the action verb of the performance part. That is the seventh guideline. Eighth guideline, use only one action verb in general for each learning outcome. Which action verb you will be using? The action verb corresponding to the highest cognitive level which you are meaning. Suppose if analyze is the highest action verb, corresponding to analyze level, you can use the action verb. You need not use the action verbs corresponding to apply level, remember level, understand level. As I mentioned already, there is a ranking order of these learning levels. If analyze level is achieved by the students, it is understood that apply level, understand level, and remember level are already achieved by the student. That is very, very important. This is again a common error in most of the universities. The ninth one, the learning level must be easily understood by the students without any ambiguity. Without any ambiguity, the learning level must be understood. That means your English language must be very, very simple. You put yourself in the place of the students and then write. Don't use complex sentences.
The student should understand with the same meaning as you meant as the teacher. Please remember this point. Then guideline 10, for each learning outcome, the cognitive level, the learning level must be mentioned within the brackets. Then guideline 11, the course outcomes may be generally at understand level and higher level. Don't write course outcomes at remember level. Please note down this point. Remember level is the lowest level. The minimum level should be understand level. But generally, if you have 6 course outcomes, at least 3 course outcomes must be at apply and higher levels. 3 can be understand, because in social sciences and humanities, I am considering all. For example, in mathematics, yes, out of 6, 4 or 5 may be apply level and higher level. In engineering courses, yes. Science courses, yes. Out of 6, 4 can be apply and higher levels. But in social sciences and humanities, out of 6, at least 3 must be, even in history, even in geography. Any course, sociology, English, any course you consider, there must be at least 3 out of 6 course outcomes at apply and higher levels. Please note these points. In several workshops offline, the faculty used to ask me in history, how do you write course outcomes at apply and higher levels? In political science, how do you write? Then I have shown the examples from the literature. So we have to reorient, we have to relearn, we have to unlearn. Then we can write at higher cognitive levels. Then the number of course outcomes may be 5 to 6. Right? 7, 8 are too high a number, and less than 5 is not advisable. When I conducted workshops offline, in some of the universities, I have conducted in many universities across the country. In some of the universities, the dean academic mentioned, sir, we have uniformly asked the departments to have 4 units in the syllabus, the curriculum design, only 4 units, and each unit 1 learning outcome, therefore 4 course outcomes. Then I said, it is not correct. That is wrong. There are so many errors in your circular. First thing is, there should not be any uniformity as far as the number of course learning outcomes. The discipline varies. Therefore, the course varies. The number of course outcomes depends on the course. It may be 5 or 6, but uniformly you cannot say it is 4. 4 is the less number. National Board of Accreditation mentioned that there should be 6 course outcomes for a 3 or 4 credit course. For a 2 credit course, yes, 4 course outcomes are acceptable. Okay. Then second error is, you see, when you say course outcomes, you have to consider the entire course and then write the course learning outcomes, not each unit 1 course outcome. Incidentally, one unit, a particular unit may have a particular learning outcome, but not that way. You have to consider the entire course and then write the learning outcomes, not based on each unit, right? So these are the guidelines for writing standard course learning outcomes, which a third party goes through your course outcomes. They should be error-free and they should speak the standard of your course. Your course should be of standard comparable to any other good university in the country. That is very important. Otherwise, the students will not join. By looking at the course outcomes, by looking at the curriculum design, they will be able to have an idea about the standard of the course. Curriculum design is very, very important.
So any subject content discussed in the class and is remembered and recalled by the student, the cognitive level is remember only. The cognitive levels apply, analyze, evaluate, and create always refer to unknown contexts, familiar but not discussed in the class, and real-time problems. In the students' major projects, mini projects, there is large scope to write the learning outcomes at higher cognitive levels like evaluate and create. Therefore, the cognitive level of each learning outcome has to be carefully understood by the teacher while formulating the learning outcomes of any course. And cognitive level must be mentioned against each learning outcome. The students will then be able to understand clearly as to what cognitive level they have to achieve in that particular learning outcome. These are the guidelines for the courses. Now, so far, I have explained what is outcome-based education in detail. What do we understand by course learning outcomes? Then I have explained the revised Bloom's classification of learning levels, 6 levels, hierarchy of the learning levels. Then I have discussed the 12 guidelines for formulating the learning outcomes. Now, I am going to give you examples. See, I am giving examples, one from engineering, one from science, 2 or 3 from social sciences, and then 1 or 2 from humanities, and 1 from management. So the participants may belong to different disciplines because I am giving examples from different categories of disciplines. You can relate yourself based on the examples and try to understand how best you can write the course learning outcomes. First one, course name, design and analysis of algorithms. This is the example related to engineering. Design and analysis of algorithms. Then course outcomes. Course outcomes or course learning outcomes both mean the same. Course outcomes is the terminology, term used by National Board of Accreditation. Course learning outcomes is the term used by UGC framework, curriculum framework. Both mean the same. No confusion. Okay. So now, after completion of this course, students should be able to, that is what is mentioned here. After completion of this course, the student should be able to, that is what is mentioned here. What is that? That is the common STEM. After completion of the course, the student should be able to, that is the common STEM. Then course outcome 1, demonstrate a familiarity with major algorithms and data structures. Demonstrate is the action verb. Familiarity with major algorithms and data structures, that is the subject content. So action verb and subject content. Action verb and subject content together, what is that called? We have discussed performance part. And what is the cognitive level? It is written in bracket, understand level. Then let us see the second course outcome, apply important algorithmic design paradigms and methods of analysis. Apply is the action verb. Important algorithmic design paradigms and methods of analysis, that is the subject content. The action verb and subject content. Together, it is called performance part. Then what is the cognitive level, sir? You look at the action verb, apply. That cognitive level is apply level. Then analyze the asymptotic performance of algorithms. Analyze is the action verb. The asymptotic performance of algorithms is the subject content. So here also only performance part is there. What is the cognitive level, sir? Cognitive level is analyze.
Then write rigorous correctness proofs for algorithms. Here also you have only performance part. Cognitive level is apply. Then synthesize efficient algorithms without any error in common engineering design situations. Synthesize efficient algorithms without any error in common engineering design situations. Look at this. In common engineering design situations, that is the condition part. Without any error, that is the criterion part. Synthesize efficient algorithms, that is the performance part. So the fifth course outcome consists of performance part, condition part, and criterion part. All the three components are included in the fifth course outcome, right? The cognitive level is create level. Fifth course outcome, cognitive level is create level, because he is going to synthesize new algorithms, creating new knowledge. In common engineering, suppose if you remove the word common engineering design situations, then what for? What for you synthesize the algorithms? That means it is missing. It is incomplete. So you want them to learn without any error. So not with one or two errors. Therefore, you have mentioned the criterion part also, because you wanted them to learn to synthesize the algorithms without any error. So this is a good example for course outcomes of the course design and analysis of algorithms. So all the guidelines, 12 guidelines which I have mentioned are valid in this course outcomes. Then analytical chemistry at MSc level. After completion of the course, students will be able to common STEM, apply the principles of data analysis, etc. Apply level, apply basic concepts of volumetric and gravimetric analysis, etc. Apply level, select suitable spectroscopic technique and interpret the results obtained, etc. Analyze level, interpret the results of thermal methods of analysis, analyze as level, interpret the results of electroanalytical methods, analyze level, evaluate the suitability and appropriateness of different methods of analysis for a given application in industry, evaluate level. You can see here, there is not even a single course outcome at understand level and remember level. All are at higher cognitive levels. So, right, 2 at apply level, and then 3 analyze level and 1 evaluate level. A very standard course at MSc level. Then comparative. So I have given one example from engineering, one example from science. Now this is the example from social science, comparative politics. Course learning outcomes. So this college used the term course learning outcomes. That is fine. On successful completion of this course, the student should be able to common STEM, describe and assess the study of comparative politics in a systematic and scientific way, cognitive level, understand level. Examine key issues in comparative politics, cognitive level, analyze level. Identify interesting research questions in comparative politics, cognitive level, analyze level. Evaluate the usefulness of various theoretical approaches to address research questions, analyze level. Describe a variety of political systems around the world, understand level. Explain how democratic and non-democratic regimes emerge and survive in the world, understand level. You can see here 1, 2, 3 understand level and 3 analyze level. So in a course in social sciences also, you can write
at understand level and analyze level. There are not even a single course outcome at remember level, right? But there are course outcomes at analyze level also. That is possible, sir. Only then the course is of good standard. If all the course outcomes are at understand level only, then the course is not of good standard. You have to rewrite, you have to redesign the curriculum. It will not be accepted. Even by the NAC committee or NBA committee, it will not be accepted. Then classical sociology theory, course learning outcomes. They have also used the word course learning outcomes. After completion of the course, the students will be able to common STEM, articulate the classical sociology theory, cognitive level understand, explain how classical sociology theory is still used by contemporary scholars, understand level, analyze the original source material in the form of monographs and articles by great thinkers like Marx, Weber, Durkheim, Simmel, Du Bois, and others from 19th century to mid-20th century, analyze level, apply key classical social theories to current social problems and issues, apply level, construct outline of the history of the emergence of discipline of sociology, analyze level. You can see here. So 2 at understand level and 2 analyze level and 1 apply level out of 5 course outcomes. Then educational psychology. After completion of this course, the students will be able to, that is the common STEM, analyze the classroom process including teacher effectiveness, school and organization factors, analyze level, critically evaluate psychological models and methods of assessment in education, evaluate level, demonstrate a critical thinking of psychological interventions, etc. Right, analyze level, demonstrate a critical understanding of psychological theories involved in different learning contexts, apply level, explain how to measure and empirically research issues within educational psychology using appropriate research methods, understand level. Here also you can see 1 understand level and then 1 evaluate level and 2 analyze level, 1 apply level. It's a very good course on educational psychology. Then principles of management. After completion of the course, the students will be able to common STEM, integrate management principles into management practices, understand level, assess global situation, including opportunities and threats that will impact the organization, management of organization, analyze level, then assess managerial practices and choices relative to ethical principles and standards, analyze level, specify how the managerial tasks of planning, organizing and controlling can be there in a variety of circumstances, apply level, evaluate different approaches to addressing issues of diversity, cognitive level, different approaches to addressing issues of diversity. In the case of management, you were listening to the lecture on student diversity, here diversity in management issues. Then evaluate the global context for taking managerial actions of planning, organizing and controlling, etc. Evaluate level. So a management course, right? So at evaluate level, apply level, analyze level, most of the course outcomes out of 6 course outcomes, very standard course. Then place of Shakespeare, English literature. You can see here 2 understand level, 2, 3 analyze level, 4 analyze level, and 1 apply level. A literature course, English literature course, you can go through. This PPT is already shared with Professor Muhammad Ateek. So he will be sharing with all of you after my lecture is delivered. Then English for technical communication. At the end of the course, the students will be able to common STEM,
Explain basic principles of grammar and vocabulary, understand level. Write clear and coherent paragraphs, apply level. They have not mentioned without any error, because that may not be achievable by majority of the students. At least there may be one error in undergraduate program. Then write effective resume, cover letter, and letters for a variety of purposes, apply level. Prepare technical reports and interpret graphs, apply level. Develop reading comprehension skills, apply level. Develop English speech sounds, stress and intonation, apply level. You can see here only 1 understand level and 5 at apply level. English for technical communication. Therefore, with these examples, I wanted to bring home the point that for any course, you bring me the syllabus of any course, I can modify the syllabus according to the learning course outcomes, apply and analyze level. At least out of 6, 3 course outcomes at apply and analyze level. It is possible in any disciplines. So far, by the workshops, because in the offline, I used to conduct in the afternoon workshops also. So far, I have vetted a few thousands of course outcomes, right? In all the disciplines, in all the, about nearly 100 different disciplines that are existing in the country of different universities. So always I found in all the disciplines, I could find that there is scope to write the course outcomes at apply, analyze, and evaluate. Please note this point, sir. If you are not able to write, means you are not putting enough thinking. You are not unlearning, right? So you have to, at the end of this lecture, you should be very clear. You have to put in necessary effort and time, especially when you write the course outcomes first time, right? Then you implement it. During the course of implementation itself, you will find that there is a need for modification of the course outcomes. It is not simply writing with hand. A lot of thinking must be done. You have to write with the mind, not with the hand. Please remember this. It is so important. These course outcomes decide the standard of your course. Then now I shall explain. So far, I have discussed how you can draft the course outcomes, guidelines, examples, everything in detail I have discussed. So all of you can go through the PPT again and again, have thorough knowledge of drafting the course outcomes, because every one of you must be able to draft, because no other person will draft course outcomes for your course, which you are teaching. So it is relevant for every one of you to draft the course outcomes. Now, origin of outcome-based education in India is based on Washington Accord, initially signed by 6 countries. What is the purpose of Washington Accord? We implement outcome-based education. All the countries who signed, initially 6 countries, now around nearly 24, 25 countries have signed. India is one of the signatories. It was started in 1989, but India signed
only in 2014. There was a gap of 25 years. So the other countries were ahead of us in terms of time, 25 years. They were implementing outcome-based education 25 years earlier. In 2014 only, India signed the Washington Accord, especially it started first with engineering programs. The National Board of Accreditation started developing the curriculum design guidelines for curriculum design for engineering programs. What is the purpose of Washington Accord? Once we implement outcome-based education and the graduate attributes, achieving the graduate attributes by the engineering graduates, these degrees will be recognized mutually by all the countries for the purpose of higher studies and for the purpose of employment in other countries. Suppose today 24 countries or 25 countries signed the Washington Accord, the degrees in India are recognized by the other 24 countries for the purpose of employment and higher studies. Automatic. Because we are implementing the outcome-based education. That is the condition. We must implement outcome-based education and then graduate attributes. So it started first with engineering, management, pharmacy, and architecture. Later, in 2019, UGC has written a letter to all the vice chancellors of the country to implement learning outcomes-based curriculum framework, LOCF. The acronym is LOCF. Learning outcomes-based curriculum framework of UGC. But in 2019, nobody implemented. 2020, a few universities, 4 or 5 universities like Delhi University started implementing. Then 2021-22 academic year, a few more. So from 2022-23 academic year, almost all the universities in the country have started implementing UGC LOCF because there is no choice. Otherwise, NAC will not recognize, give accreditation unless you implement outcome-based education. NBA will not give accreditation unless you implement outcome-based education. Right? So what do we mean by graduate attributes? Initially, they were formulated by NBA at par with the graduate attributes by other countries, other 23 countries. Graduate attributes, when we say, are a set of general knowledge, skills, and attitudes. KSA. K stands for knowledge, S stands for skills, A stands for attitudes. These graduate attributes are identified by NBA. Universities cannot write graduate attributes. NBA has defined. You have to simply follow. Okay. Then learning outcomes-based curriculum framework of UGC has defined the graduate attributes for arts, science, commerce, humanities, all these programs. Other than engineering, management, pharmacy, architecture. These programs are governed by NBA framework and all other programs including law, journalism, mass communication, fine arts, dancing, music, all other programs are governed by UGC LOCF. Therefore, I am presenting before you both the frameworks because the participants are the diverse participants. So this is the objectives of learning outcomes-based curriculum framework. You can go through it, is self-explanatory. I am not explaining that now. So graduate attributes in a simplified form, UGC has written in big paragraphs because these graduate attributes are not only for teachers, they're also for students. So without sacrificing the essence given by UGC document, I have
made this in the simplified form. These are the, again, I have made them 12 graduate attributes because NBA also has given 12 graduate attributes. 12 is a good number because you have to do a lot of mapping and other things. So number 1, disciplinary knowledge. Number 2, communication skills. Number 3, critical thinking and problem solving. Number 4, analytical reasoning. Number 5, research related skills. Number 6, collaboration, cooperation and teamwork. Number 7, information and digital literacy. Number 8, multicultural competence. Number 9, moral and ethical awareness or reasoning. Number 10, community engagement. Number 11, leadership readiness or qualities. Number 12, self-learning and lifelong learning. These 12 graduate attributes and graduate attributes given by NBA, nearly similar. Small, minor differences are there, nearly similar, right? So this is the curriculum framework given by UGC, right? So here, there are 2 approaches, top to bottom approach. You start with vision and mission. Vision and mission are for the department. Vision and mission are for the department. See here, for the department, which is organizing the program. Then you have qualification descriptors, second component in the framework, qualification descriptors. What do we mean by qualification descriptors? This is the disciplinary knowledge and application of the knowledge, communication skills, self-learning and lifelong learning skills, learning skills related to job opportunities, employable opportunities. By the time the graduates qualify for that program, therefore they are called qualification descriptors. What are they again? Disciplinary knowledge, application of disciplinary knowledge, communication skills, self-learning and lifelong learning skills, then skills for employable opportunities, job opportunities, what they have learned. All these are called qualification descriptors. Then in order to achieve the qualification descriptors, there must be program learning outcomes. Each program should have learning outcomes. Here it is missing, not showing here. There are graduate attributes hiding here. So all the 12 graduate attributes must be reflected in the program learning outcomes. And there must be good agreement between program learning outcomes and qualification descriptors. Both the things you have to see. So in order to achieve the program learning outcomes, you have to write the course learning outcomes for all the courses. If it is a 4-year UG program, you may have around 8 semesters, around 45 to 50 courses, including project, right? So about 160 credits if it is a 4-year UG honors program. So for each course, you have to write the course learning outcomes. So for want of space, I have mentioned only 3 courses. There are 45 courses. Every course learning outcomes you have to write. And if it is a PG program, there may be about 25 courses, 4 semesters, right? Or 24 courses. So for every course, you have to write the course learning outcomes. Vision and mission should be matching, should be in agreement with the vision and mission of your institute. So this is, first you start with the top to bottom approach. Then again you see bottom to top approach. Whether your course learning outcomes, by these, whether the student can achieve the program learning outcomes. By achieving the program learning outcomes, whether the student can achieve the qualification descriptors. So all these are related to the program. Qualification descriptors, program learning outcomes, course learning outcomes. All these 3 you have to design in the curriculum.
Graduate attributes are given by UGC. Graduate attributes are common to all the programs in UGC framework, guided by UGC. Okay, you don't have to draft graduate attributes. What you have to draft for each program, for every program, these are different. Qualification descriptors are different. Program learning outcomes are different. Course learning outcomes are different. For each program, academic program, you have to design. That is curriculum design. And vision and mission are there for the department, because the department not only conducting the courses, you will be doing research, you will be doing outreach programs. So all those are related to in the mission statements, and you will have the vision where you have to go. That is how you draft the vision statement. Sir, now I shall show you. This is the curriculum design in NBA curriculum framework. So the same words, vision and mission also same. Instead of qualification descriptors, NBA uses the term program educational objectives. The meaning is same in both the cases, sir. UGC uses the term qualification, uses the term program educational objectives. Both mean the same. UGC uses program learning outcomes. NBA uses program outcomes. UGC uses course learning outcomes. NBA uses course outcomes. Here also it is hiding behind the graduate attributes. On the right side of the arrow, you have that is missing, that is hiding here, graduate attributes. So there are also graduate attributes, here also graduate attributes. Essentially, conceptually, both the frameworks are similar, only the terminology is different. Conceptually, both are same. Please understand this point. Now, one by one, I shall explain briefly. When you say vision of the department, it is the futuristic statement that the department would like to reach over a period of time, 5 years from now, 10 years from now. Where do you think your department would attain, would reach? Right? That is the vision statement, normally written in a single sentence. Then mission statements of the department are the means to achieve the vision. 3 to 4 statements you have to write. So mission statement 1, sir, related to human resource development. MS1, related to human resource development through teaching programs offered by the department or center. Mission statement 2, related to research. Suppose if what is an affiliated college, not conducting any research, then you need not write MS2. You need not write. But MS3, related to extension programs, training programs, right? So even affiliated colleges should carry out dissemination of knowledge throughout outreach programs, exchange programs. So MS3 is relevant to all colleges and universities. MS4, collaboration with other national and international organizations. This is also very necessary, sir. Today, NAC and NBA insist upon networking of institutions, collaboration of the institutions, at least minimum at the national level. Every college or university must collaborate with some other higher level institution or similar level institution at the national level to start with. Some universities, eminent universities already have established collaborations at international level. That is mission statement 4. So 3 to 4. So if research is not there, you can avoid MS2. So this is the vision and mission statements of Chemistry Department of Central University, Karnataka, for which I was the consultant for some time in order to develop the outcome-based curriculum design. Vision to be one of the well-recognized departments of chemistry for higher learning in India and the world in terms of producing skilled and employable chemists, teachers, researchers, teachers, and entrepreneurs
who are go-getters in meeting the challenges of industry and society. That is the vision statement given by the Department of Chemistry. Department will have the vision statement. University or college also will have the vision and mission statement. But every department should have the vision and mission statements. This is also part of curriculum design. Whatever framework I have shown is the curriculum design framework only. Then mission statements, MS1, to impart quality education at postgraduate and doctoral levels. MS2, to provide the state-of-art research facilities. MS3, to become a hub for human resource development and sponsored projects. MS4, to associate with the national and international reputed. Very good vision and mission statements. Then program educational objectives, NBA terminology, qualification descriptors, UGC, LOCF terminology. I have already explained this, right? The qualification descriptors or program describe the academic standard for a specific qualification. So I have developed a format, a template. By using this template, all of you can write qualification descriptors or program educational objectives, as the case may be, for your academic program. Each academic program has qualification descriptors or program educational objectives. So after completion of this academic program, the graduates will be able to, that is the common step. My dear friends, so in everything, I have mentioned some in black. Whatever is there in black, you retain as it is. You don't have to change. Whatever I have mentioned in red, you fill there. Suppose demonstrate comprehensive knowledge and skills in areas such as, you retain as it is. It is common to all disciplines, all academic programs. Mention different areas of academic program that you fill. Then qualification descriptor 2. Use knowledge and skills required for identifying problems and issues, etc., etc. You retain as it is. You don't have to change. All this is given in UGC document. I have just minor modifications without changing the essence of the UGC document to make it comfortable. Then QD3, apply disciplinary knowledge and transferable skills. Mention different important areas of the academic program. QD4, communicate results of studies, etc. Important fields of the academic program mentioned. QD5, demonstrate skills of self-learning and lifelong learning. Retain as it is. QD6, demonstrate knowledge and transferable skills in the fields of, mention important fields of academic program. Relevant in employment opportunities like, you mention examples. In organizations like, etc., you mention some examples. So I have given here the example of qualification descriptors drafted by Central University of Karnataka for MSc Chemistry program. You can go through if you are interested leisurely, right? So then what you have to do is, in the curriculum design, this is very important part. You have to do mapping. Mapping is very important. Mapping between qualification descriptors, column, and then mission statements in the row. MS1, MS2, MS3, MS4. Here 3 stands for higher mapping. You can see here in this table, FU3s, FU1s, FU2s. 3 is for good high mapping. 2 indicates medium mapping. 1 indicates low mapping. Please note, and this mapping must be done by you. This is also an important part of your curriculum design. Then program learning outcomes. I have already discussed what are program learning outcomes. Then in addition to program learning outcomes, you have to write program specific outcomes. It may include 2 to 3 program specific outcomes depending on the content, advanced areas of knowledge. If you have
Suppose in computer science, you have machine learning, you have artificial intelligence, you have Internet of Things. You write 3 program-specific outcomes, right? Suppose in chemistry, you have supramolecular chemistry, you have nanochemistry. You write 2 program-specific outcomes, right? So in any discipline of knowledge, in any academic program, if you have introduced advanced courses, you write program-specific outcomes. So in addition to program learning outcomes, 12 plus 3, if you have 3. So this is the example of the chemistry department. It is self-explanatory. You can go through that. So please remember, program learning outcomes should be in agreement with the graduate attributes. 12 graduate attributes related to each graduate attribute apply to your academic program and write program learning outcomes. Program learning outcomes must be in agreement with qualification descriptors. Now again, you have to do mapping. Program learning outcomes, then qualification descriptors. PLO1 to PLO2 program learning outcomes. Qualification descriptors, QD1 to QD6, those are qualification descriptors. Then I have already discussed at length the course learning outcomes. I'm skipping this slide. But what is course design? Right? So please, this course design is followed in many universities and colleges where I have given lectures. For every course, this is the best course design. Please follow this. First, prerequisite knowledge. Second, course learning outcomes, 5 to 6 for a 3 or 4 credit course. Third, mapping of CLOs with PLOs in the form of a table. 3 for high mapping, 2 for medium mapping, 1 for low mapping, dash for no mapping. You should not leave the box empty, dash no mapping. Okay. Mapping of CLOs with 1 or more of PLOs in the form of a table. Then 4, detailed syllabus including references. 5, teaching learning strategies in brief. Lecturing method is no longer valid. You have to use active learning strategies. Which strategies you are going to use there? Group discussion, think, group share strategy, right? Or problem solving, project method, right? Which strategy you are using? Simply mention the names, that's all, 4 to 5 sentences. Then assessment methods and weightages in brief. Right. Here I am putting forward before you one point. In continuous assessment, at least there should be flexibility for the teacher to assess up to 20 marks. Because most of the universities have the standardized pattern, uniformity across all the disciplines, across all the teachers. Some 2 minors and 1 end semester examination, or 2 minors, 1 mid and 1 end semester examination. Uniform, there is controller of examinations, and all that. I am of the opinion, let 80 marks be the centralized pattern, uniformity. At least 20 marks must be given to the flexibility to the teacher. He can assess in the form of mini project. He can assess in the form of a term paper, right? It should be, he can give some part to assignments, some part to mini project, some part to term paper, right? It is necessary, sir. Flexibility is the order of the day. But because of the flexibility, one should use it in a right way. One should have good knowledge about pedagogy, pedagogical practices, good knowledge about teaching, learning, active learning strategies, and the best ways of assessment strategies. Only then that flexibility will be meaningful. This is a good course design, sir. Please note down.
Then now I am giving you the template. Common for all programs. You simply follow the template. You can get a very good curriculum design. Name of the department, vision statement, mission statements 3 to 4. Qualification descriptors or PEOs. Mapping, qualification descriptors and mission statements. Then program learning outcomes, 12 numbers. Program specific outcomes, 2 to 3. Mapping between program learning outcomes and program specific outcomes and qualification descriptors. 3 for high mapping, 2 for medium mapping, 1 for low mapping, dash for no mapping. Okay. Then course design, course code, title of the course, LTP. L stands for lecture hours, T stands for tutorial hours, P stands for practical hours, field work, community service, community engagement. And credits. This is a very good template for course design. Then you write the prerequisite course or prerequisite knowledge. For level 2 course, level 1 course is the prerequisite course. For level 3 course, level 2 course is the prerequisite course. But what is the prerequisite course for level 1 course? The +2 knowledge. So 4 to 5 sentences you can mention the basic things they should know. Then course learning outcomes 5 to 6. Then mapping between CLOs and PLOs and PSOs. Then detailed syllabus in the form of units. Teaching learning strategies in brief, assessment methods and weightages. And drafting syllabus, salient points. It must be the student-centered syllabus. It should be of great relevance to the needs of the students by the time they graduate. The course learning outcomes and the syllabi must be discussed in the faculty meeting, include the junior most faculty member also. All faculty must deliberate upon the best syllabus comparable at the national level and international level, with the external experts from academia, industry, employing organizations, alumni, then in BOS and academic council. The current and future trends in the discipline must be taken into consideration. The syllabus must not be heavy in outcome-based education, as active learning strategies are to be implemented in the classroom teaching. And for every course, the course design has to be prepared by the concerned teacher. For the purpose of calculation of credits, 1 lecture hour, 1 credit. 1 tutorial hour is also 1 credit. 2 hours of lab work, field work or workshop practice or community engagement equivalent to 1 credit. All the course designs have to be incorporated in the curriculum semester-wise, starting from the first semester. Conclusion. If a teacher designs a standard outcome-based curriculum and implements the same by using appropriate pedagogy and assessment strategies, the teacher mentors generations of students to become innovators, entrepreneurs, experts in one's own profession, and above all, great teachers. Such teachers will be remembered by their students forever. Such teachers will attain meaning and fulfillment of their lives. I pay rich tributes to such great teachers. I wish that all of you become such great teachers in course of time. Thank you very much. Now, these are the recommended videos. My channel name is Professor B.V. Apparao. The entire pedagogy is disseminated in the form of videos in YouTube, right? So all these links are also given here. Thank you very much. Now question answer session. Questions, please. Your questions are most valuable to me. I'm happy to have the second session because I'm not encroaching into the time of the next speaker. That's an advantage for me. Questions, please. Participants, if you have any doubt or any query, please ask. Your questions are most valuable to me, sir. Only through questions I enjoy. Otherwise, I find the session incomplete.
Questions, please. You can unmute yourself and ask questions. Respected participant, please ask the question. If you have any doubt or any query, please feel free to ask. Anything you can reflect upon, because you may be facing several problems in curriculum design. You can ask me any question related to pedagogy, curriculum design, anything you can ask me. Generally, for this lecture, there will be lots of questions, because this topic is not yet completely understood by the faculty at large. You may be having many points to share. If it is offline lecture, I would have made you participants of my lecture. It used to be participatory learning. This is the disadvantage of online lectures. I would greatly appreciate the questioner, especially who asked the first question. Anything you can ask me, sir. Yeah, hello, sir. Thank you. Thank you, Mr. Pardikar. Yeah, please proceed. Yeah, how do we define program outcomes, sir? Yeah, very good question. Program outcomes, you have the 12 graduate attributes. Okay, you look at each graduate attribute. For each graduate attribute, relate to your discipline. For example, disciplinary knowledge is the first, or engineering knowledge. If it is NBA curriculum, the graduate attribute is engineering knowledge. So relate to your discipline. Actually, for BTech programs, the program outcomes are given by NBA. Yeah, it's 12 program outcomes. 12 program outcomes are given by NBA. Yeah. Only for management, architecture, and pharmacy, you have to, because you don't have, for management, you cannot write engineering knowledge. You have to write disciplinary knowledge. Accordingly, you modify related to your discipline, your academic program. For arts, science, commerce, humanities, UGC framework has given the graduate attributes, but look at the graduate attributes, they have not given program outcomes. UGC has not given program outcomes. You have to draft program outcomes, one program outcome for each graduate attribute related to your discipline. That is how I have given you the example. Later you can go through the PPT. I have given the 12 program outcomes drafted by Central University of Karnataka, Department of Chemistry. So each program outcome corresponds to one graduate attribute. So that if the program outcomes are achieved, that means graduate attributes are achieved. So there was a question asked by me, asked by a management expert, because for management, program outcomes are not given by NBA. You have to draft based on the graduate attributes. For each graduate attribute, one program outcome. So it is advisable to write a 12 program, at least a 12 program outcome. How do we map that with the course outcome? Yeah, very good question.
Very good question you have asked, sir. I appreciate you very much. Thank you, sir. This is a very important point he has asked. See, when you want to map course outcomes with the program outcomes, you have to take into consideration your teaching strategies and assessment strategies also. How do the students attain course outcomes? Only by teaching strategies and assessment strategies, they ultimately achieve the course outcome. Therefore, because why I am telling this is, for example, communication skills. In your course outcomes, except in English and in Indian language, you don't write course communications for other courses. You won't write. You won't write self-learning and lifelong learning. You won't write research-related skills in your course outcome. You don't write collaboration and teamwork. But in your teaching learning strategies, suppose you are giving group assignments, you are giving group tasks, you are giving mini projects, you are conducting several tests. That means they are achieving the communication skill. That means they are achieving the collaboration and teamwork when you give group assignment and group task. Right? They are achieving self-learning and lifelong learning because you are giving the assignment. Therefore, for all these general program outcomes, for every course, if you honestly are implementing assignment, honestly implementing the mini project or group task, group discussion, you modify your teaching learning strategies, implement active learning strategies inside the classroom and outside the classroom. For all these things, you can put 3 in the box. You can put 3 in the box. I have seen several mapping tables. It is called course articulation matrix. They have not filled anything. They have kept them empty boxes. Only 4 or 5 boxes are filled out of 12 into 6, about nearly 72 boxes are there. Out of 72 boxes, only 6 or 7 boxes are filled. The remaining boxes are empty. That is wrong. You can fill up to, out of 72 boxes for each set of course outcomes, you can fill up to 36 boxes minimum with 3, 2, 1. The remaining you can keep off, dash. The idea is, by the time the student has achieved course learning outcomes of all the courses, about 45 courses in a program, definitely he must have achieved all the program outcomes. That is the idea. So in mapping table, please use your course learning outcomes and also teaching learning. Based on teaching learning strategies and assessment strategies, you fill self-learning, lifelong learning 3, collaboration and teamwork 3, research related skills 3, then moral awareness or professional ethics 3. If you are able to maintain good teaching relationship, teacher-student relationship, integrity is maintained among the students, you can put 3 or like that. You have to map. Right? An excellent question, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Participants, any more question, please ask. I am extremely grateful to Professor A.B. Pardikar for his enlightening questions, because now I am happy. Because of the questions, I am happy. Thank you, sir. It is my pleasure. Any more questions? Please ask.
This PPT will be shared with all of you. I advise you to kindly go through PPT again and again. By listening to the lecture, you will gain knowledge only to an extent of 25%. By going through PPT, reflecting upon, discussing with the other participants in your college or university, you can gain another 25% to an extent of 50%. You seriously start implementing in the curriculum design whatever you have learned through the lecture, very sincerely, very honestly, with all dedication, you will learn another 25%, total 75%. The remaining 25%, you go on learning on a continuous basis, provided you are willing to learn. Learning is a continuous process. As I give lectures, through your questions, I learn. By preparing for the lectures, I learn. By reading latest articles, I learn. So unless I update continuously, I become outdated. I become irrelevant. In order to be relevant, I should learn on a continuous basis. I advise all of you to learn on a continuous basis. Then only you can become great teachers. Thank you very much. Participants, if any more questions? Sir, shall we conclude? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So, on behalf of Professor Ram Meghe Institute of Technology and Research, UGC Malviya Mission Teacher Training Center, and all the respected teacher participants participating in this NEP Orientation and Sensitization program, I extend our heartfelt gratitude to our distinguished guest speaker, Venkata Apparao Boyapati sir, for sharing your valuable insights and expertise with us today. Your knowledge and experiences have provided us with a wealth of information and inspiration. We are truly honored to have had you here, sir. Again, thank you very, very much, sir. And with these words, I declare that this session is over. Thank you. Okay. Thank you, sir.